Are we live? Let me check. I think we are live. Are we live? My dear, are we live? Hello? Can you hear me? Can you hear me? Are we live? Yes, 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 yes. चलो अभी शुरू करते हैं हमारा मजा मजा मजा। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? ऑडियो वीडियो इज एवरीथिंग फाइन? Yes, let's proceed. Okay, yes. Yes. Excellent. Yesterday we saw like three triangles. So एक बार refresh कर लेंगे sir. Whatever we have studied. एक बार refresh कर लेते हैं sir. ये भी हाँ ठीक है. So the first triangle is something like this. There is no problem with inlet. एक मिनट में पूरा refresh कर लेंगे. Today we'll do some. We'll take some new concepts. Classes ठीक चल रहा है sir? Okay. Classes ठीक चल रहा है? बहुत क्लियर है. वेरी गुड. इसको थोड़ा मैं साउंड छोटा कर दो. नाउ suppose this is the vane and you know this is the inlet velocity. This I write it as V1 which is also equal to VW1. ठीक है sir. Now suppose this is our U1 which is also equal to U and this is our VR1. Excellent sir. Okay, this is my inlet triangle. This is my inlet triangle. Correct? Correct. Right. Now, the fluid is coming out. So there are different possibilities. Let's see. Inlet triangle will be the same. The only thing is outlet triangle. Dekhte hai, sir. So the fluid will come out. This will be our VR2. Look at the direction of blade, rightward. So therefore, you should write rightward. And please note down that this length and this length should be same. Because in Pelton wheel, because interviews में पूछ सकता, exam में पूछ सकता, which one of the following velocity triangles is wrong? He may be asking, sirs. Okay, right. So therefore, this is my U2, which is also equal to U. ठीक है, sirs. Like this, and closing should be in the like this, and closing should be in the opposite direction. This is our V2. This is one possibility. This is V2. And now I'll introduce one term known as blade angle. Okay, let me introduce one angle known as blade angle. ध्यान से सुनो. The fluid is coming out. Okay, and you know that this is the tangential direction. So ध्यान से सुनो. The relative velocity with which the fluid is coming out in the tangential direction, this we call it as blade angle. But this is at exit, so I rate it as beta 2. So beta 2 is known as blade angle at exit. Is known as blade angle at exit. ठीक है सर. I repeat सर. ध्यान से सुनिएगा सर, बहुत क्लैरिटी से. फ्लूइड ऐसा आ रहा है, ठीक है सर. दिस इज द वेलोसिटी. देखो फ्लूइड ऐसा आ रहा है, आने के बाद एक्चुअली इट इज कमिंग आउट लाइक दिस. देखो ऐसा आ रहा है, ठीक है सर. इट इज कमिंग आउट लाइक दिस. दिस इज आवर VR2. तो देर इज वन टर्म नोन एज जेट डिफ्लेक्शन एंगल. I repeat, there is one term known as jet deflection angle. जेट ऐसे आते हुए पूरा डिफ्लेक्ट हुआ सर. ध्यान से सुनिए.
So look at, jet has come like this with the absolute velocity v1, it has come and then ऐसा होके पूरा डिफ्लेक्ट हुआ. तो कितना डिफ्लेक्ट हुआ सर? If you see clearly, this is known as jet deflection angle. Jet deflection angle. Excellent sir, this is jet. So देखो ऊपर फ्लूइड आके देखो ऐसा आते हुए, देखो look at, ऐसा आते हुए like this like this like this like this, पूरा इधर डिफ्लेक्ट होके ऐसा गया. This is jet deflection angle. And already you know what is this angle sir? ये वाला एंगल क्या है? What is this angle? देखो VR2 से आया, this is beta2. And you know अगर ऐसा रहता है, if this is beta2, what will be this angle sir? Beta2. तो ये भी actually same line है, same line, so this will be beta2. And you know clearly, my dear loving students, so this total angle is 180. This total angle is 180. So blade exit angle plus jet deflection angle is equal to 180 degree. So blade angle at exit beta2 is equal to 180 minus theta, where theta is known as jet deflection angle. Up to this, is it clear, my dear students? कौन सा प्राइवेट हुआ रे? वो यही का, ये जो 2 मिनट का था उसको प्राइवेट कर दिए, उसको डिलीट कर दिए. प्राइवेट नहीं हुआ, कोई भी प्राइवेट नहीं हुआ सर. जो इसी का जो क्लिपिंग था उसको निकाल दिए सर. इज इट ओके? कोई प्राइवेट नहीं हुआ, हमारे में सब पब्लिक है, ये पब्लिक है, सब जानता है. ओके राइट. क्या ये बात समझ में आया सर? प्लीज द जेट डिफ्लेक्शन एंगल समझ में आया सर? लुक एट, द फ्लूइड इज एंटरिंग एंड डिफ्लेक्टिंग लाइक दिस. सो थीटा, generally the blade angle is around 15 degree. So if the blade angle is 15 degree, what will be jet deflection angle sir? अगर ब्लेड एंगल 15 डिग्री है तो 15 उधर जाएगा तो 165. जनरली, आई एम नॉट सेइंग एवरी टाइम, तो जनरली द जेट डिफ्लेक्शन एंगल इज अराउंड 165 डिग्री एंड द ब्लेड एंगल एट द एग्जिट इज 15 डिग्री. होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस. क्या ये बात सबको समझ में आई सर? क्या ये बात सभी को समझ में आई सर? होप यू अंडरस्टूड. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So the fluid is entering and leaving like this. Fluid is entering and leaving like this. So jet deflection angle आ गया beta2. ठीक है सर. अब हम कुछ exit velocity triangles पे ध्यान देंगे. Inlet velocity तो same रहेगा. So can we read like this? तो V1 is VW1. तो can you tell me what is VR1? देखो सर, VR1 is equal to, देखो VR1. तो can I write VR1 as V1? This total length is V1 and this is U1. So if you want VR1, it will be V1 minus U1 or U. देखो, because U1 U2 is same. I repeat sir. तो if you want this VR1, अगर आपको VR1 चाहिए, if you want VR1, it will be total length V1 minus U. So this is my VR1. And one more thing, sometimes he say frictionless blades. मतलब जो fluid flow हो रहा है, यहाँ पे कोई friction नहीं है. अगर फ्रिक्शन नहीं है इन इंपल्स टर्बाइन, प्लीज अंडरस्टैंड केयरफुली, देयर इज नो चेंज ऑफ प्रेशर इन द रनर. तो रिएक्शन टर्बाइन में रनर का, ध्यान से सुनो सर, इन रिएक्शन टर्बाइन द प्रेशर चेंजेस, दैट विल बी डिस्कसिंग लेटर. तो यहां पे द प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट. एज द प्रेशर इज रिमेनिंग कांस्टेंट, तो यहां पे अगर फ्रिक्शनलेस है तो जनरली आइडियल इंपल्स टर्बाइन में रिलेटिव वेलोसिटी इन एन आइडियल impulse turbine, in an ideal impulse turbine, in brackets, frictionless blades, VR1 is equal to VR2. ये जनरली इंपल्स टर्बाइन्स में ऐसा ही होता है सर, बिकॉज फ्लूइड जब आता है, रिलेटिव वेलोसिटी, इट्स नॉट एब्सोल्यूट. ऑब्वियसली fluid will enter the impulse turbine with high velocity. That absolute velocity will decrease and that will give you power. But यहाँ पे मैं absolute velocity नहीं बोल रहा हूँ सर. So as the relative velocity कब आएगा सर? When both are moving. Both are moving means in passage. So therefore अगर frictionless entry, frictionless exit है तो VR1 is equal to VR2. अब आप बताओ सर. Now I'll ask you some questions. Please. Now my question is, suppose there is a friction. The fluid is entering at VR1. तो VR1 से आके ब्लेड्स फ्रिक्शन है मान लो, तो फ्रिक्शन के कारण रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? कम होगा. सो जनरली इफ इट इज द रियल केस, VR2 विल बी, मित्रों लेट मी रिपीट. सो इफ देयर इज अ फ्रिक्शन, VR2 will be less than VR1. So there is one term known as blade friction coefficient. There is one term known as
blade friction coefficient. That is, it has nothing to do with the coefficient of friction, that is K. So K is defined as VR2 by VR1. So obviously, as VR2 is less than VR1, K will be less than 1. So if K is not given, मित्रों, अरे यार रिएक्शन टर्बाइन क्या होता है? अभी तो इंपल्स पढ़ी है ना सर, अभी तो इंपल्स पढ़ी। रिएक्शन टर्बाइन क्या होता है मैं उसका पूरा प्रिंसिपल बताऊंगा ना सर, पहले इंपल्स तो पढ़ो। इंपल्स में द फ्लूइड विल एंटर विद एंटायर काइनेटिक एनर्जी एज द फ्लूइड फ्लोज थ्रू रनर, देयर इज नो चेंज इन प्रेशर, स्टैटिक प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट। अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे एंटर हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही लीव करेगा। ओनली काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड इन डेवलपिंग पावर, दैट इज इंपल्स। अभी पहले इंपल्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद रिएक्शन की तरफ आएंगे। विल दैट बी ओके सर? Mr. Mujahid, will that be okay? Say something, say something. If that is okay, I'll proceed. Okay, no problem at all. So, generally blade, और एक बात है सर, if the blade friction coefficient K is not given, we'll take K as 1. When K is 1, VR2 is equal to VR1. I repeat, sir, if blade friction coefficient is not given, then I'll take K as 1. So if nothing is given, don't ask me, sir, he has not given blade friction coefficient, that's why I left the question. If nothing is given, I take ideal. Ideal means VR2 is equal to VR1. If it is clear up to this, I'll proceed, sir. यहां तक सबको क्लियर है तो I'll proceed, sir. एंड आज मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए, सर एक बार थर्मो और अप्लाइड थर्मो एक्सी के लिए पूरा करो। तो फर्स्ट वीक में पूरा नए क्वेश्चंस जो 8 महीने से प्रिपेयर किया, पूरा मैं आपको दे दूंगा, दैट आई एम प्रॉमिसिंग। अभी मतलब जो मैसेजेस है बता रहा हूं, ओके राइट। एंड लेट मी कंप्लीट दिस। यहां तक क्लैरिटी आ गया सर सभी को? अप टू दिस इज इट क्लियर? यस। अब देखो, now there are three types of triangles. देखो, if nothing is given, ideal VR1 is VR2. If there is a friction, VR2 is less than VR1, तो blade friction coefficient is this. Okay, no problem. एक बार इनलेट ट्रायंगल देख लेना। इनलेट ट्रायंगल ऑलरेडी वी हैव सीन। देखो, फ्रॉम द इनलेट ट्रायंगल मित्रों, फ्रॉम द इनलेट, दिस इज द इनलेट ट्रायंगल, दिस इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी V1 एंड दिस इज U1 एंड दिस इज VR1। तो VR1 is equal to V1 minus U, but V1 is VW1 because entirely it is in the tangential direction. Now let us come to the exit triangle. So as I told you, there are 3 types of exit triangles. ध्यान से सुनिएगा सर। Look at one of the triangles is like this. It is coming out with VR2. It is coming out with VR2. ठीक है सर। And this is our U2. Excellent sir. But U2 is also equal to U. But U2 is also equal to U. देखो, U2 is also equal to U. Okay. And like this, and ये होगा आपका like this, and this is our V2 sir, and this is our blade angle at the exit beta 2. Excellent sir. ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा सर। इट्स नॉट ट्रिक बट आई विल गिव यू लॉजिक्स। हाउ मेनी आई सेड एग्जिट के कितने ट्रायंगल्स होते हैं सर? 3. द सेकंड केस इज दिस, इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द ब्लेड एट VR2। ठीक है सर, दिस इज VR2 and this is one case, and this is our U2, which is also equal to U. U2 is equal to U, and like this. And the closing is V2, which is completely VF2 because there is no whirl component. In this case, VW2 is equal to 0. And you know, relative velocity, tangential direction. This we call it as blade angle at the exit. ये एक possibility है. This is case 1. This is case 2. And I have given the case 3 also. Like this, okay. This is our VR2. And this is our, say, U2 or U exit, and like this closing is opposite. Are the triangles clear sir? This is my V2 and relative velocity tangential, this is my beta 2. Are the 3 triangles clear sir? There are 3 possibilities. That's why I said do not by heart anything. That's why मैं बोला आपको रटो मत सर। क्या ये तीनों triangles clear है सर? If these are clear, I'll proceed sir. ओके, अब देखो विच ट्रायंगल इज टू बी ड्रॉन एंड व्हेन। कुछ नहीं है सर, इधर देखना। लुक एट माय डियर फ्रेंड्स, विच ट्रायंगल इज टू बी ड्रॉन एंड व्हेन। लुक एट, यू नो V2 का ये टेंजेंशियल कंपोनेंट, दिस विल बी VW2. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ VW2? V2 इज टुवर्ड्स मी, मेरे तरफ है, तो इसीलिए इसका डायरेक्शन लेफ्ट होगा सर। And this is our VF2. Excellent sir. Now my dear students, I'll ask you one question. Please answer to this question. एक simple question बताऊंगा आपको। इधर देखो, मुझे ना ये लेंथ चाहिए सर, दिस लेंथ। क्या बता सकते सर? ये VR2 है सर,
ये अपोजिट इज साइन, ये कॉस है. कैन वी राइट दिस एज VR2 cos β2? मित्रों, दिस इज VR2, दिस इज VR2, सो अपोजिट इज साइन, दिस इज एडजेसेंट इज कॉस, तो कैन आई राइट दिस एज VR2 cos β2? यस सर. तो आप देखो विच वन इज मोर, व्हेन VR2 cos β2 is greater than u is only this much, u is only this much, but VR2 cos β2 is this much, VR2 cos β2 का लेंथ ज्यादा है. So if VR आपको कुछ नहीं करने का है सर, you should check VR2 cos β2. If VR2 cos β2 is more, if VR2 cos β2 is more than u, then it will be first triangle. Now look at, so VR2 cos β2 and ये हो गया आपका VR2 cos β2. देखो, दिस इज VR2 साइन, ये कॉस है, ये अपोजिट साइन, ये कॉस है, तो VR2. इन दिस केस क्या होगा, VR2 cos β2 इज इक्वल टू u. ये सेकंड केस है सर, ये सेकंड केस. इधर आइए, एंड यू नो वेरी वेल माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज VR2, सो दिस विल बी VR2 cos β2. समझ में आ रहा है सर? यस. नाउ इसमें क्या हो रहा है सर, VR2 cos β2 इज लेस देन यू, देन यू विल गेट केस 3. तो आपको कुछ नहीं करने का, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू फाइंड आउट VR2 cos β2. इफ VR2 cos β2 इज लेस देन यू, अगर u ज्यादा है, अगर u ज्यादा है तो थर्ड ट्रायंगल आएगा. If VR2 cos β2 is equal to u, then the wall at the exit will be equal to 0. Wall at the exit will be 0. VR2 cos β2 is u, second triangle आएगा. If VR2 cos, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, स्टूडेंट्स आर बाय हार्टिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग. इफ यू रिमेंबर, इट इज वेरी डेंजरस सर, वेरी वेरी डेंजरस, आई एम टेलिंग यू, ये बहुत डेंजरस है सर. इधर देखो, VR2 cos β2, अगर VR2 cos β2 ज्यादा है compared to you, then you will get the first case. So hope these three triangles are clear, my dear loving students. अगर ये clear है तो मैं आगे बढ़ूंगा सर. I am waiting for your answers. Are these triangles clear? Are these triangles clear, sir? I am waiting for your answers. If they are clear, then I'll proceed. अगर ये clear है तो मैं आगे बढ़ूंगा सर. Is this clear? Clear. Okay. If these three triangles are clear, then we can proceed. Now, clear? Yes. No one is commenting. तो बंद कर देंगे सर दुकान. No one is commenting. ठीक है, 100%. वेरी गुड. नाउ आप देखो सर, इन दिस केस, you know, in all these cases, this is my inlet V1 is equal to VW1. What is the direction of VW1? VW1 is right. इसमें भी VW1 is right. देखो, इनलेट ट्रायंगल में कोई फर्क नहीं सर. V1 is equal to VW1. इसमें भी V1 is equal to VW1. So in all these cases, VW1 is in the rightward direction. What is VW2 sir? इधर देखो, VW2. This is my V2. The component of this is in the leftward direction. So VW2, VW1 are in the opposite direction. So what will be the power equation, sir? So VW m dot VW1 minus VW2 into U already have given. So minus of minus plus हो जाएगा. So in this case, the power equation will be m dot into VW1 minus of minus. Directly I am writing this, sir. Directly VW1 minus VW2. U1, U2 are same. Therefore I have taken it out. So minus of minus, it will be plus. In this case, power will be equal to m dot VW1. And what is VW2? VW2 is 0. So therefore it will be U. And the third one is, power is m dot into, देखो sir, V1 is in the V1 or VW1 rightward, and the component of this is my VW1. So देखो, V2 का component, and this is our VF2. This is our VF2. V2 का component is in the rightward direction. Rightward. So VW1 rightward, both are rightward. So you will get minus. तो ये आप याद रख लेना सर. This you remember. So hope it is clear, sir. If this is clear, I'll proceed, my dear loving students. अगर ये clear है तो क्लैरिटी आ जाए सर सभी को. Yes. हम क्या करेंगे? Which one is giving more power? First you tell me, which one is giving me more power? First or second or third? देखो, इसमें तो माइनस है, it will be less. इसमें तो VW2 नहीं, okay. इसमें both प्लस है,
So this will give me maximum power. So now I am deriving the condition for maximum power. Let me repeat, sir. I am deriving the condition for maximum power. Hope it is clear, sir. हम सारे बहुत डिटेल में करेंगे, ये ज्यादा पावर देगा, तो we will proceed, sir. So therefore, now I write maximum blade efficiency. Blade efficiency. Sometimes we also call it as diagram efficiency. Sometimes we also call it as diagram efficiency. एक बार देखो सर, तो इसको blade efficiency भी बोलते हैं या diagram efficiency भी बोलते हैं. Now you may be asking, sir, why is it known as blade efficiency or diagram? सर केस 3 में मिस्टेक हो गया फार्मूला के में. कहां सर? एक सेकंड देखते हैं सर. केस 3 में कहां पे मिस्टेक हुआ सर? आप बताइए, वेयर इज द मिस्टेक सर? समवन सेड केस 3 में मिस्टेक हुआ. VW1 is in the rightward direction. V2 is like this. तो इसका component is also in the rightward direction. जब both are same, it will be minus. तो कहां पे? ओहो, अच्छा VW2 है ना? ओके. Right. Okay, it's not a mistake. तो अब printing mistake बोलते हैं सर. It's not a conceptual mistake. Okay, you understood, I think. आ गया सर? आ गया? चलिए शुरू करते हैं. Now, देखो सर, now we'll go for I want maximum efficiency. तो क्या इक्वेशन ले? ध्यान से सुनिए सर. ये मेरा रनर है सर मित्रों. एक सेकंड. देखो सर, this is the runner. On the runner we have blades. These are all blades. देखो these are all blades. ठीक है सर. तो आप देखिए सर, from here the nozzle is entering with an absolute velocity v1. Let the mass flow rate here be m dot. मतलब m dot से इधर आ रहा है. Very good. Now there is one term known as blade efficiency or runner efficiency. This is the runner. So this is the runner, my dear friends. This is the runner. ये runner. तो आप देखो, you know, हमने तो power develop किया. What is the runner power? अभी तो हम equation दिए सर. This is known as runner power. This is known as the runner power. What is the runner power, sir? मित्रों, what is the runner power? अभी तो देखिए. So it will be m dot into VW1 plus VW2 into U. Why are you taking this? Because I want maximum efficiency. This will give me maximum efficiency. That's why I'm taking plus. Otherwise, minus, it is not giving maximum efficiency. I want the condition for maximum efficiency. Excellent, sir. This is the runner power. The runner is developing this much power. This is the output. Look at this. What is the input? Yes, turbine ko input kya hai, sir? This is the input. And input is in the form of kinetic energy. So input is in the impulse turbine. Input is kinetic energy, and this is the runner power. So the power developed by the runner is the blades are developing. मतलब ये after hitting this, it is developing power. तो runner और blade बोलते हैं इसको, runner power और blade power. तो efficiency क्या होगा? Output. ये मेरे को output मिला है सर. So after nozzles hitting this, this is developing this much power. ये output है. So for this is output और ये input है. तो ये किसके लिए है सर? It is known as runner or the blade efficiency, because they are impinging the blade. Blade को टकरा रहे, blade से power मिल रहा है. That's why it is known as blade efficiency. Now you may be asking question, sir, why is it known as diagram efficiency? ध्यान से सुनिए सर. Look at the runner power is this, and VW1, VW2 we calculate from velocity diagram. I repeat, VW1, VW2 हम diagram से calculate करते हैं, velocity diagram. That's why this efficiency is known as a diagram or blade efficiency. Have you understood, sir? क्या आप लोगों को समझ में आया सर सभी को? मित्रों, क्या ओके, देखो अब देखेंगे ब्लेड एफिशिएंसी. मतलब इस ब्लेड के लिए ये इनपुट है सर. फॉर आई वांट, देखो देयर आर, आज तो बहुत होगा सर. नॉजल एफिशिएंसी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, ब्लेड एफिशिएंसी, देन क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी. You should be crystal clear with all this. Otherwise, you cannot attack questions. So I will go very slowly and neatly. I'll explain. देखिए सर, तो
इसके लिए ये नॉजल है ना, नॉजल है, ये इनपुट है सर, ये इनपुट है, ये इनपुट है। सो इस ब्लेड्स के लिए इनपुट है, ब्लेड्स के लिए आउटपुट है, इस ब्लेड्स के लिए, ये ब्लेड्स के लिए इनपुट है, ये ब्लेड्स के लिए आउटपुट है सर। सो इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों इधर देखो, इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों देखना एक बार। सो द डायग्राम और ब्लेड एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट, ये ब्लेड क्या आउटपुट डेवलप कर रहा है, एम डॉट इंटू VW1 प्लस VW2 इंटू यू बाई, देखो बाई व्हाट इज द इनपुट, देखो इफ दिस इज पावर, इनपुट शुड आल्सो बी इन पावर बिकॉज एफिशिएंसी का कोई यूनिट नहीं होता है। तो व्हाट इज द इनपुट काइनेटिक एनर्जी, सो द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m v1 स्क्वायर, बट गलत है सर, अगर यहां पे मास फ्लो रेट होता है, यहां पे भी मास फ्लो रेट होना चाहिए बिकॉज देयर शुड बी कंसिस्टेंसी ऑफ यूनिट्स। नाउ यू मे बी आस्किंग क्वेश्चन, सर क्या हमेशा ब्लेड एफिशिएंसी यही होता है, ना, इट डिपेंड्स ऑन इज इट अ केस 1, इज इट अ केस 2, इज इट अ केस 2। अगर केस 1 होता है तो ये आएगा, केस 2 होता है तो ये ड्रॉप हो जाएगा, केस 3 होता है तो यहां माइनस आएगा। सो दिस इज द ब्लेडिंग। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, आई वांट मैक्सिमम एफिशिएंसी। सो if he is not asking maximum, then whatever the case is there you should put here. तो इसीलिए what I write is, यहां पे I write plus or minus. So if it is case 3 it will become minus, if it is case 2 it will be, this will become 0, if it is case 1 it will be plus. तो मैं सारे केसेस इस पे ले लिया। इज इट क्लियर सर? सर देखो सर, यू कैन आस्क मी पर्सनली ऑल दीज क्वेश्चंस बिकॉज आप यूट्यूब पे मुझे डिविएट मत करना। यहाँ पे मैं आया हूं आपको पढ़ाने के लिए, बीच बीच में मुझे डीआरडीओ को कॉल आता है। प्लीज सर आप, आई विल गिव माई नंबर, यू कैन मैसेज मी ऑन दैट नंबर एंड आस्क, बट ड्यूरिंग द क्लास काइंडली डोंट डिविएट सर, मेरा एक रिक्वेस्ट है सर, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट सर, माफी चाहता हूं सर, प्लीज। आपको मेरा नंबर दूंगा, ये इस नंबर पे मैसेज करना सर, लेकिन मैं रिप्लाई कल ही दे पाऊंगा। इस नंबर पे मैसेज करना, आई रिप्लाई टुमारो, ओके, नो प्रॉब्लम। सो होप ब्लेड एफिशिएंसी इज क्लियर, होप ब्लेड एफिशिएंसी इज क्लियर सर। सबको ब्लेड एफिशिएंसी का क्लैरिटी आ गया सर? आई थिंक ब्लेड एफिशिएंसी इज क्लियर, ठीक है सर। नाउ ही सेज कंडीशन फॉर मैक्सिमम ब्लीडिंग एफिशिएंसी, अब बहुत इंपॉर्टेंट है सर, कंडीशन फॉर मैक्सिमम ब्लीडिंग एफिशिएंसी। एक बार देखो, सो मित्रों दिस इज द इक्वेशन, क्लियर सर? क्या ये डायग्राम, व्हाई इज इट नोन एज डायग्राम एफिशिएंसी? बिकॉज दिस VW1 VW2 आर obtained from velocity triangles. And why is it known as blade efficiency? Because blade is developing power, blades के लिए kinetic energy is the input and the output is runner power. So this is developing this much power, so इसके लिए ये input, ये output. So runner or the blade or diagram efficiency, this blade efficiency is given by runner power by this input kinetic energy. Hope this is clear. Now stop sirs, we'll go for, देखिए, we'll go for condition for maximum blade efficiency. Condition for maximum blade efficiency. Condition for, whenever I say maximum, ये plus आएगा minus आएगा सर। Whenever it is maximum, it will be plus, it will be case 1. Whenever it is maximum, it is plus and case 1, case 1, case 1 triangle, case 1 triangle. Okay. So therefore, so the diagram or the blade efficiency is given by, ये 2 ऊपर जाएगा सर, 2 और m dot कट जाएगा, so we have VW1 plus VW2 into U by V1 square. I repeat sir, ये 2 ऊपर जाएगा, गया, m dot गया, VW1 plus VW2 into U by V1 square. This is the equation for normal blade efficiency. ठीक है, so maximum देखेंगे सर। क्या आप लोग तैयार है? Now I'll go for maximum. देखो सर, I'll go for maximum। मेरे प्यारे दोस्तों देखो एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाई, आई टेल यू वन थिंग, स्टूडेंट्स आर थिंकिंग सर डायरेक्टली फार्मूला दे दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस वेयर इवन इफ यू नो डायरेक्ट फार्मूला यू कैनॉट सॉल्व द क्वेश्चन बिकॉज विदाउट नोइंग इंट्रिकेट डिटेल्स यू कैनॉट डू इट सर। दैट्स व्हाई व्हाटएवर आई एम टीचिंग आई विल सी दैट ऑल द डिटेल्स आर गिवन टू यू। ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए सर, तो ये इनलेट ट्रायंगल है सर, दिस इज द इनलेट ट्रायंगल and this is our V1 which is also equal to VW1 and look at this is our U1 which is also U, ठीक है sir, and this is our VR1. Excellent sir, excellent। अब देखो, can I write VW1 as V1 sir?
क्या मैं VW1 को V1 लिख सकता हूं? देखो VW1 एवरीथिंग इज इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये होगा सर. नाउ लेट्स कम टू द एग्जिट ट्रायंगल. ये तो केस 1 है सर. अगर ये केस 1 है तो यू विल गेट दिस ट्रायंगल सर. इफ दिस इज केस 1 लाइक दिस, दिस इज माई केस 1. देखो दिस इज माई बीटा 2. अब आप बताओ व्हाट इज VW2? मुझे पता है सर, दिस इज माई VW2. This is our VW2. This is our VW2. And this is our U. And everyone knows this is VR2 cos beta 2. Hope this is clear, sir. दोबारा बता रहा हूं सर, दोबारा बताओ. So we are taking case 1 velocity triangle. Uh, Output input whole runner is na sir. Then why not is told as runner and so instead blade? अच्छा, इसलिए मैं लिखा ना सर रनर पावर बोल के, रनर एफिशिएंसी भी बोलो, इसीलिए मैं लिखा रनर पावर लेना, बिकॉज ऑन द रनर देर आर ब्लेड्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्लेड एफिशिएंसी. आप अलग अलग वर्ड्स यूज कर सकते हैं, लेकिन दुनिया जो भी यूज कर रहा है वी हैव टू यूज दैट वर्ड ओनली. यू मे बी इन्वेंटिंग अ न्यू वर्ड एंड नो द वर्ल्ड डजंट नो दैट. सो देखो व्हाट एवर द वर्ल्ड इज यूजिंग आई एम यूजिंग. यस रनर पावर है, kinetic energy, runner efficiency. Yes, absolutely. There is nothing wrong. So as on the runner there are blades, therefore I am calling it blade efficiency. And these blade velocities V1, VW, U. I want this VR1. This VR1 can be written as total V1 minus U. Yes. So VW2 is equal to K VR1. What is VR1? V1 minus U. V1 minus U. ध्यान से सुनिएगा सर. K. What is VR1? V1 minus U. VR1 is V1 minus U. Cos beta 2 माइनस यू. ठीक है सर. तो VW2 इज दिस वन, यहां पुट करना सर. सो द ब्लेड एफिशिएंसी इज गिवन बाय, यहां तक सबको समझ में, सर कुछ नहीं किया सर. आई रोट द वैल्यू ऑफ VW2 एज दिस, इसका कंपोनेंट, इसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है VR2 का, VR2 cos beta 2 minus U, VR2 cos beta 2 minus U is VW2. So VW2 is this, but VR2 can be written as K VR1 cos beta 2 minus U K. But what is VR1? VR1 can be written as V1 minus U. ठीक है, V1 minus U. So VR1 is V1 minus U cos beta 2 minus U. यहां तक आ गया सर. अब देखो, now I'll put VW1 VW2 in this equation. So the blade efficiency is given by 2 by यहां पे जगह नहीं है, I will create space. Okay, देखो. So the blade efficiency is given by 2 to VW1. What is VW1, sir? V1 plus VW2. What is VW2? K into V1 minus U cos beta 2 minus U. देखो, I am substituting 2. VW1 is V1 plus VW2 is K VR1 cos beta 2. VW2 is K into V1 minus U cos beta 2 minus U. VW2 value I have substituted into U. There is U also. यहां पे into U. देखो ये into U इधर लिख रहा हूं सर, एक सेकंड. ये U इधर लिख रहा हूं by V1 square. Up to this is it clear sir? ये मेरा equation हो गया सर. This is my equation for blade efficiency. But as I said, I want the condition for maximum efficiency. Is it clear? कुछ तो बोलो. Say something. Now this is the equation. अब इस equation को we'll try to modify. So the blade efficiency is given by 2U by V1 square into, देखो यहां पे V1 है, माइनस यू है, माइनस यू. ठीक है सर. V1 माइनस यू प्लस K इंटू V1 माइनस यू cos बीटा 2. ठीक है सर. देखो 2U by V1 स्क्वायर, V1 माइनस यू, ये अलग है सर, ये अलग है. V1 माइनस यू प्लस K V1 माइनस यू cos बीटा 2. ओके, सो द ब्लेड एफिशिएंसी इज गिवन बाय 2U by V1 स्क्वायर. आप एक काम कीजिए सर, तो V1 माइनस U को बाहर लीजिए. इफ आई टेक V1 माइनस U, 1 प्लस K cos बीटा 2. एक्सेलेंट सर, दिस इज द इक्वेशन. यहां तक आई थिंक देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. होगा सर, वी आर नियरिंग. अब न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे. सो यहां तक आई थिंक देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो लेट्स प्रोसीड सर. नाउ आई विल इंट्रोड्यूस वन टर्म नोन एज, यहां तक नो प्रॉब्लम ना, राइट? आई विल इंट्रोड्यूस वन टर्म, ब्लेड speed ratio, and we are designating that with rho.
So the blade speed ratio is nothing but blade velocity by absolute velocity from the nozzle. V1 is absolute velocity of the fluid from the nozzle. This V1 is given different names. क्या बता सकते क्या क्या? It is known as spouting velocity. It is also known as jet velocity. समझ में आ रहा है सर? It is also known as absolute velocity of the fluid at the inlet. So therefore, it is known as blade speed ratio, blade speed ratio, blade speed ratio. Buffering. So is there any buffering? Is there any problem? अरे बफरिंग बोल रहे हैं सर कोई? सर एक काम कीजिए सर, अगर अटेंड करना है तो सिंसियरली कंप्लीट अटेंड करना, नहीं तो मत करना सर, बिकॉज यू विल नॉट अंडरस्टैंड सच कॉम्प्लिकेटेड. कुछ प्रॉब्लम हुआ सर? नो ना? अर्लियर इट वाज, अभी तो ठीक है, राइट. अब देखो, तो आई विल राइट दिस एज द ब्लेड इज इक्वल टू, ध्यान से सुनो, इसमें से मैं क्या करता हूं सर, V1 को बाहर ले लो, 2u, V1 बाहर ले लेना, V1 बाहर लिए, अगर मैं V1 बाहर लेता हूं तो इट विल बी u बाई V1 इंटू 1 प्लस k cos बीटा 2. ठीक है सर. आई हैव टेकन, इसमें से V1 बाहर लिया बाई V1 स्क्वायर. आई रिपीट, इसमें से V1 बाहर लिया 1 माइनस u बाई V1, तो ये V1 गया. तो ब्लेडिंग एफिशिएंसी इज गिवन बाई 2. व्हाट इज u बाई V1? रो. u by v1 is rho, u by v1 is rho, 1 minus u by v1 is rho into 1 plus k cos beta 2. अभी भी मैं कुछ कंडीशन यूज नहीं किया, अभी तक मैं कोई कंडीशन यूज नहीं किया. सो दिस द मतलब आई हैव नॉट येट ऑब्टेन मैक्सिमम एफिशिएंसी, सो आई एम राइटिंग द जनरल इक्वेशन. हाँ अभी ठीक है सर. नाउ आई विल राइट, देखो, whenever you want maximum or minimum, you differentiate with variable and equate it to 0. अब देखो, now मेरे प्यारे दोस्तों, फॉर मैक्सिमम ब्लेडिंग एफिशिएंसी क्या करेंगे? डिफरेंशिएट दिस विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएबल. ध्यान से सुनो, आपको डाउट आ रहा होगा, K इज अ कांस्टेंट, ब्लेड एंगल इज फिक्स्ड, वो तो कांस्टेंट है सर. तो अब वेरिएबल क्या है? रो है. तो इसको किसके साथ डिफरेंशिएट करना है सर? रो के साथ डिफरेंशिएट करना है. देन यू शुड इक्वेट इट टू 0. फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ वेरिएबल एंड इक्वेट इट टू 0. So what do I get? So therefore d neta b by d rho डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा सर? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर. तो एक सेकंड, लेट मी इरेज दिस सर. देखो एक सेकंड. सो दिस आई विल राइट इट एज ब्लेड एफिशिएंसी इज इक्वल टू 2 को अंदर रखो, ऐसा रखो, रो इंटू 1 इज रो माइनस रो इंटू रो इज रो स्क्वायर इंटू 1 प्लस k cos बीटा 2. अब इसको डिफरेंशिएट करो सर. फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी मित्रों, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, ये तो जनरल इक्वेशन है, हो सके तो याद रखना सर, हो सके तो इसको याद रखना. इफ पॉसिबल रिमेंबर दिस इक्वेशन, इफ पॉसिबल यू रिमेंबर दिस इक्वेशन. ठीक है सर, इसमें कोई कंडीशन है. अब हम कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी यूज करेंगे. फॉर मैक्सिमम ब्लेडिंग एफिशिएंसी डिफरेंशिएट दिस विथ रेस्पेक्ट टू रो and equate it to 0. So therefore, the maximum bleeding efficiency is given by 2 times rho का differentiation 1, rho square is 2 rho into, ये तो constant है सर, 1 plus k cos beta 2, and that should be equal to 0. You differentiate this with variable and equate it to 0. ये तो 0 हो ही नहीं सकता because beta का angle है, k का value है, so this should be 0. So therefore 2 cannot be 0. So 1 minus 2 rho should be 0. इसका मतलब रो शुड बी इक्वल टू हाफ. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर. दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इक्वेशन सर. सो फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ पेल्टन व्हील, द कंडीशन इज ब्लेड स्पीड रेशियो शुड बी हाफ. व्हाट इज ब्लेड स्पीड रेशियो? द ब्लेड स्पीड बाय एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड शुड बी इक्वल टू हाफ. So therefore, or I can say the blade speed should be equal to half of the jet speed. This will give you the condition for maximum efficiency. And if I want maximum efficiency, मैं क्या करूंगा सर? This is the equation of efficiency. याद रखना सर, ये efficiency का equation को याद रख लेना. This is not, देखो, this is the general equation of efficiency. I have differentiated this and I got this condition. अगर ये condition इसमें put करता हूं, then I will get maximum efficiency. Let us calculate what is the maximum efficiency sir. एक बार देखो. Let's see what is the maximum efficiency. Mitro, let's see what is the maximum efficiency. So I'll write the maximum blading efficiency or maximum diagram efficiency is given by twice. You know what is rho? Rho is half.
माइनस 1 बाई, देखो एक बार, रो स्क्वायर, रो इज हाफ, रो स्क्वायर इज 1/4, 1/4 इंटू 1 प्लस के कॉस बीटा 2। एक्सलेंट सर, एक्सलेंट। सो ये होगा आपका, ओके, द मैक्सिमम ब्लेडिंग एफिशिएंसी इज गिवन बाय 2 इंटू, इधर 2 से मल्टीप्लाई करो 4 हो जाएगा, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, 1/4, तो ये होगा 1/2। हाँ 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 हाँ, 1/4 एग्जैक्टली। अरे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, सो 2 माइनस 1 इज 1, 2 2 4, 1/4 आएगा इंटू 1 प्लस के कॉस बीटा 2। सो देयरफॉर, सो ये 2 1s 2 2s, सो द मैक्सिमम ब्लेडिंग एफिशिएंसी इज गिवन बाय 1 प्लस के कॉस बीटा 2/2, बिकॉज यहां पे 2 है सर, यहां पे 2 है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है सर, ये बहुत बार आ चुका है सर। इज द डेरिवेशन क्लियर सर? इज द डेरिवेशन क्लियर सर? इफ दिस इज क्लियर, आई विल प्रोसीड। If this is clear, I'll proceed. I'm waiting. I'm waiting for your answers. If this is clear, I'll proceed, sirs. I'm waiting for your answers. Yes, 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 yes. पक्का क्लियर? तो क्या याद रखना है मैं बताता हूं सर। यू रिमेंबर दिस इक्वेशन, एक सेकंड, ये वाला इक्वेशन याद रख लेना, और फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ये वाला, एंड लास्ट द इक्वेशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी इज 1 प्लस के कॉस बीटा 2/2, बस, वेयर बीटा 2 इज द एग्जिट ब्लेड एंगल। अगर आपको ये क्लियर है तो आई विल प्रोसीड सर। इफ दिस इज क्लियर, आई विल प्रोसीड। ठीक है सर। नाउ लेट मी राइट ऑल द इक्वेशंस। एक बार देखो द जनरल इक्वेशन, सो देयरफॉर for maximum blading efficiency, for maximum blading efficiency, rho should be equal to half, that is u by v1, and the maximum blading efficiency is given by 1 plus k cos beta 2/2. This is the equation for maximum efficiency. Is it clear? Is it clear, sir? Yes, yes. Now एक काम करते हैं सर, I would like to plot, माय डियर स्टूडेंट्स, पूछ सकता सर एग्जाम में, आई वुड लाइक टू प्लॉट रो वर्सेस एफिशिएंसी, ब्लेड एफिशिएंसी। एक्सेलेंट सर। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर रो 0 है, एफिशिएंसी क्या होगा? एक सेकंड देखो, रो का मतलब होता है u by v1, u by v1, तो u is 0। इसका मतलब क्या है? u 0 का मतलब ब्लेड मूव ही नहीं हो रहा। when the blade is not at all rotating, where is the power developed? Power developed is 0, efficiency is 0। I repeat sir, when rho is 0, what is rho? u by v1। when rho is 0, rho 0 है तो u 0 हो गया सर। when u is 0, blade speed is 0। blade speed 0 का मतलब blade is not at all rotating। when blade is not at all rotating, there is no power developed। power develop हुआ ही नहीं, so therefore when there is no power developed, the efficiency will be 0। so therefore when rho is 0, my efficiency is 0। excellent sir। देखो, when efficiency is 0, when rho is 0, and where is efficiency maximum? when rho is half, efficiency is maximum। this is maximum, and let us take rho is equal to 1। what do you mean by rho is equal to 1? rho is u by v1 is equal to 1, और u is equal to v1। ध्यान से सुनो, ये पावर क्यों डेवलप हो रहा है सर? बिकॉज माई जेट इज हिटिंग ब्लेड, मेरा जेट ब्लेड को हिट करके घुमा रहा है। लेकिन यहां पे सिचुएशन देखो, ब्लेड मूव हो रहा है, अगर अब ब्लेड को कौन मूव कर रहा है भगवान जाने, और जेट इज मूविंग, both are moving at same speed, will the blade hit, will the jet hit the blade? No। so will the power be developed by the jet? No। again the efficiency is 0। नहीं यार आपको समझ में, दोबारा बता रहा हूं, if rho is 1, my blade speed and jet speed both are same, दोनों एक ही स्पीड से जा रहा है, क्या ये जेट आके ब्लेड को टकरा के कोई पावर डेवलप हो रहा है? ना। So power should be developed by hitting, hydraulic action होना चाहिए। My jet should hit and cause the rotation। When both are moving at same velocity, ये अपने velocity से जा रहा है, वो अपने velocity से आ रहा है, both are moving at same velocity, so jet is not hitting and not developing any power। when jet is not developing any power, the efficiency will be 0। again when rho is equal to 1, again when rho is equal to 1, the efficiency will be 0 because the power developed is 0। so this is the maximum efficiency। so you will have something like this, something like this। क्या ये बात सभी को समझ में आई सर?
Say something, sir. If you have any doubts, ask me. I'll explain again. Dear students, is the concept clear? Efficiency will be obtained when the power is obtained. Power is obtained only when jet will hit the blade. बट यहाँ पे जेट अपने वेलोसिटी से जा रहा है, ब्लेड अपने, देखो जेट इज मूविंग विद सेम मीटर वेलोसिटी, दिस इज आल्सो मूविंग. सो इज दिस क्लियर सर? सो ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर. चलो मैं आगे बढ़ सकता हूं सर. विद योर परमिशन कैन आई प्रोसीड? देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे सर. देखो now I'll go for various efficiencies. I'll go for various efficiencies. Various. Same concept we'll be using in Francis turbine and Kaplan turbine also. तो इसीलिए अब थोड़ा careful रहो. Now I request everyone to be careful. Okay. Various efficiencies. Think, देखो एक बार. पहला efficiency, yesterday we discussed nozzle efficiency. Already we have discussed this. देखो देखो एक सेकंड, ऑब्जर्व हियर. विथ द हेड एच, नेट हेड है सॉरी, ये ग्रॉस हेड में से पेनस्टॉक में जो लॉसेस हुए, वॉट एवर द लॉसेस हैव टेकन प्लेस इन पेनस्टॉक फ्रॉम द ग्रॉस हेड आई हैव रिमूव्ड. दिस इज द नेट हेड विथ विच इट इज एंटरिंग एंड it is coming out with a velocity v1. Excellent sir. Now you know I'll convert, if this is head, this should also be head. अब देखो सर, वो समझ में आ रहा है सर आपको? Okay. Now कल मैं इक्वेशन दिया था, what is the power input? So if I convert everything in terms of power, it should be power. अब ध्यान से सुनो. What is the nozzle efficiency, my dear students? What is the nozzle efficiency? This head, this is the output. Nozzle is used for developing power. This is the output and this is the input. So output head is v1 square by 2g. क्योंकि मैं हेड में कन्वर्ट कर रहा हूं, बिकॉज द इनपुट इज इन द फॉर्म ऑफ हेड, सो आउटपुट शुड आल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ हेड. सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी हेड व्हिच इज डेवलप्ड बाय द नोजल, एंड व्हाट इज द इनपुट? दिस हेड इज गिवन, सो देयरफॉर इट इज दिस हेड. सो द नोजल एफिशिएंसी इज गिवन बाय v1 स्क्वायर बाय 2gh. मित्रों इसको मैं दूसरी तरीके से भी लिख सकता हूं सर. इधर देखो. सो द नोजल एफिशिएंसी इज गिवन बाय, लुक एट, I'll multiply numerator and denominator with m dot. So the same equation I'll multiply with m dot. So what do I get? देखो एक बार, please listen sir. What do I get? Look at. So can I write, my dear loving students, if you observe it very clearly, what is this? You tell me. If you tell, I'll be so happy, sir. If you tell, I'll be so happy. What is this? Half m dot v1 square. तो इसको लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी विच इज हाफ m dot v1 square काइनेटिक एनर्जी रेट बाय दिस द काइनेटिक बाय m dot gh. देखो एक बार, क्या मैं राइट? देखो बाय m dot into gh. एक्सलेंट सर. देखो हाफ m v1 square, दिस इज काइनेटिक एनर्जी बाय m dot gh. अब देखो m dot मास फ्लो रेट इज गिवन बाय, हम फ्लूइड में पढ़े थे, मास फ्लो रेट इज रो av. So this can also be written as m dot is equal to rho. What is area into velocity? Area into velocity is discharge. So therefore now I'll write this as, देखो, the nozzle efficiency is given by kinetic energy by, ध्यान से सुनो, m dot can be written as rho q. M dot can be written as rho q. M dot is rho q. Let me write again. आराम से, टेंशन नहीं लेने का सर. m dot is, देखो, m dot is rho into q. M dot is rho q into gh. Excellent sir. What is rho into g? What is rho into g? Specific weight. Specific weight w can be written as, the specific weight w can be written as rho g. So therefore the nozzle efficiency can be written as the kinetic energy by this rho g can be written as w QH. ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है सर, इसको भी याद रख लेना. इज इट ओके? ऑलरेडी मैं और एक इक्वेशन भी दिया था कल. द नोजल एफिशिएंसी कैन बी रिटन एज कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का होल स्क्वायर. यस्टरडे आई गिव, ये दोनों याद रख लेना सर. आई देखो, थ्री फॉर्म्स देयर ऑन नोजल एफिशिएंसी. वन इज दिस फॉर्मेट, सेकंड इज दिस फॉर्मेट, एंड द थर्ड इज दिस फॉर्मेट. प्लीज अपने नोट्स में लिख लीजिए सर. आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू राइट दिस इन योर नोट्स.
प्लीज राइट इन योर नोट्स। सो क्या ये पहला एफिशिएंसी क्लियर है सभी को? ऑलरेडी आई हैव डिस्कस दिस यस्टरडे। हाँ, इसमें क्या है ना, बीटा वन इज जीरो बिकॉज फ्लूइड एक एंगल से नहीं आ रहा है। बीटा वन इज डायरेक्टली, देखो, रिलेटिव वेलोसिटी एंड द ब्लेड दे आर इन द सेम डायरेक्शन, बीटा वन इज जीरो। ऐसा मत बोलो कि अगर दूसरे टाइप्स ऑफ टर्बाइन्स लेंगे तो बीटा वन भी आएगा सर। इन दिस केस बीटा वन इज जीरो बिकॉज वो एग्जैक्टली टेंजेंशियल डायरेक्शन में है। होप यू अंडरस्टूड मिस्टर मुजाहिद, होप यू अंडरस्टूड। क्योंकि क्योंकि अगर कुछ एंगल पे आ रहा है उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा, ये तो डायरेक्टली टेंजेंशियल है तो एंगल इज जीरो इटसेल्फ। लेकिन एग्जिट पे क्या है, व्हेन इट इज कमिंग आउट देयर इज अ एंगल। ओके, लीव इट। तो यहां तक समझ में आया सर? प्लीज ये याद रहेगा आपको। विल यू रिमेंबर दिस? यस। अब देखो, तो अभी मैं दिया था सर, जस्ट नो आई गिव यू एक इक्वेशन लिखेंगे सर। सो नोजल एफिशिएंसी इज गिवन बाय kinetic energy by WQH. What is kinetic energy, sir? Half m dot v1 square. Why m dot, sir? Because already you know this is input power. So if this is power, if this has a unit of power, this should also be in power. Power होने के लिए rate को लिखे हम, ठीक है सर? No. Now already you have seen the blade efficiency. What is blade efficiency? सुनो ध्यान से, इधर देखो सर, एक एक सीक्वेंशियली जाएंगे। यहां से हेड एच दे रहे और यहां से काइनेटिक एनर्जी मिला, और ये काइनेटिक एनर्जी से अब ये ब्लेड पे आ रहा है सर, ब्लेड पे आ रहा है। तो ब्लेड पे गिरने के बाद क्या डेवलप हुआ? ब्लेड पे गिरने के बाद रनर पावर डेवलप हुआ। तो अगर हम ब्लेड की बात कर रहे हैं, इफ आई टॉक अबाउट ब्लेड, इट विल बी रनर पावर बाय दिस फॉर द ब्लेड, this is the output and the input is kinetic energy. Input is kinetic energy. Excellent sir, excellent. So देखो, सुनो केयरफुली, अगर ये ब्लेड है तो ये रनर पावर, रनर रनर आउटपुट है। इस ब्लेड के लिए ये आउटपुट है, ये इनपुट है। इस ब्लेड्स के लिए ये आउटपुट है, ये इनपुट है। इस ब्लेड्स के लिए ये आउटपुट है, ये इनपुट है। ये आउटपुट रनर बाय काइनेटिक एनर्जी एंड द इनपुट इज काइनेटिक एनर्जी। यहां तक समझ में सर? इस ब्लेड, देखो, ब्लेड एफिशिएंसी इज runner power output by input, output by input. So runner is output and this is input. यहां तक क्लैरिटी आ गया सर सभी को? Yes, this is one equation and already you know the runner power can be written as m dot into vw1 plus or minus vw2 into u. अगर फर्स्ट केस है तो प्लस आएगा, सेकंड केस है तो ये जीरो आएगा, थर्ड केस है तो माइनस आएगा, इट डिपेंड्स। तो इज इट क्लियर सर? चलो, शैल वी प्रोसीड सर? तो अगर आप ये भी आ गया सर, ये भी आ गया। अब देखो, फाइनली याद रखना, पावर प्लांट में फाइनल पावर इज शाफ्ट पावर। जो फाइनली आपको आउटपुट मिल रहा है, इट्स नॉट रनर पावर, एंड दिस इज कपल्ड टू जनरेटर, जनरेटर शाफ्ट। तो जनरेटर शाफ्ट आने के बाद यहां पे फाइनली आपको शाफ्ट पावर मिलता है सर, फाइनली आपको शाफ्ट पावर मिलता है। सो अब देखो, ऑलरेडी रनर से पावर डेवलप होगा तो यहां पे शाफ्ट रहेंगे, बेरिंग्स रहेंगे, मैकेनिकल लॉसेस रहेंगे। तो ये रनर पावर और शाफ्ट पावर के बीच में जो लॉसेस आ रहा है उनको मैकेनिकल लॉसेस बोलते हैं सर। आई रिपीट सर, रनर हैज डेवलप्ड पावर, the runner shaft is connected to generator shaft so that final, तो वहां पे shaft रन करने के लिए बेरिंग मतलब फ्रिक्शनल लॉसेस, मैकेनिकल लॉस होंगे। सो नाउ आई यूज द वर्ड मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी इज इक्वल टू, देखो, रनर मैकेनिकल, यहां से यहां मैकेनिकल, बिकॉज शाफ्ट से लॉसेस हो रहे हैं। तो ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, इनपुट। सो देयरफॉर इट इज शाफ्ट पावर बाय रनर पावर। आई रिपीट सर, तो मैकेनिकल एफिशिएंसी के लिए शाफ्ट पावर, ये फाइनल आउटपुट पावर, देखो, अगर कुछ नहीं देता है इन द क्वेश्चन, इफ नथिंग इज गिवन, इट इज द शाफ्ट पावर। तो रनर से हमें शाफ्ट की तरफ जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में मैकेनिकल लॉसेस, बेरिंग लॉसेस, फ्रिक्शन लॉस होंगे। अब फ्लूइड का कोई रोल ही नहीं है सर। वंस द रनर हैज डेवलप पावर, देयर इज नो नीड ऑफ एनी फ्लूइड, फ्लूइड का खत्म हो गया, अब मैकेनिकल लॉसेस। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी इज आउटपुट बाय इनपुट। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी के लिए शाफ्ट इज द आउटपुट, रनर इज द इनपुट। मैकेनिकल के लिए शाफ्ट इज द आउटपुट, रनर इज द इनपुट। मैकेनिकल के लिए शाफ्ट इज द आउटपुट, रनर इज द इनपुट। सो देयरफॉर, तो ये दिस इज द मैकेनिकल एफिशिएंसी। क्या ये बात सभी को समझ में है सर? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सो वी हैव मैकेनिकल एफिशिएंसी। इफ दिस इज क्लियर, आई विल प्रोसीड सर। मित्रों, इफ दिस इज क्लियर, आई विल प्रोसीड।
efficiency is output by input. देखो, nozzle efficiency, output kinetic energy, input net head. Runner blade efficiency, runner power by kinetic energy. Mechanical efficiency, output by input. Yes sir. अब देखो, if this is clear, एक काम करता हूं सर मैं, देखो, I'll put all the equations एक जगह रख देता हूं. इधर देखो, all the equations I'll put at one place. The nozzle efficiency is given by kinetic energy by, एक बार देखना सर, the nozzle efficiency is kinetic energy by WQH. ठीक है, and the blade efficiency is given by runner power by blade efficiency, runner power by kinetic energy. देखो एक बार, the blade efficiency is nozzle हो गया, the blade efficiency is given by runner power by kinetic energy, and last but not the least, mechanical efficiency is equal to final shaft power by runner power. Excellent sir. अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, look at carefully, this is the head. हम ये इनपुट दे रहे हैं, यहां से कहा जा रहा है सर, देखो यहां से V1, उसके बाद रनर, तो यहां से रनर पावर आ रहा है और रनर से यहां पे शाफ्ट पावर आ रहा है सर. तो मुझे बताइए सर, ओवरऑल चाहिए, ओवरऑल, तो ओवरऑल इज इक्वल टू ओवरऑल फाइनल आउटपुट बाई एक्चुअल इनपुट. फाइनल आउटपुट बाय एक्चुअल इनपुट. ओवरऑल बीच में क्या हो रहा मुझे कोई लेना देना नहीं है. सो ओवरऑल एफिशिएंसी इज फाइनल आउटपुट इज शाफ्ट पावर and the actual input is this. But what is the actual input sir? You convert this. अगर हेड H है तो क्या होगा सर? WQH. तो इसको कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ पावर. अगर ये शाफ्ट पावर है तो इसको भी पावर में कन्वर्ट करना, इस हेड को. ऑलरेडी यू नो द पावर इक्वेशन इज WQH. सो देयरफॉर दिस इज द ओवरऑल एफिशिएंसी. क्या ये बात सभी को समझ में आई सर? आई रिपीट, ऑलरेडी आप बोले ना सर, इधर देखो, नॉजल एफिशिएंसी क्या है सर? काइनेटिक एनर्जी. दिस द आउटपुट. इनपुट क्या है सर? WQH. इनपुट इज दिस. इसको अगर हेड में कन्वर्ट करना है, पावर में कन्वर्ट करना है, इनपुट इज दिस. इसको करना है हाफ m डॉट V1 स्क्वायर. इसको पावर में कन्वर्ट करना है PR. इसको पावर में कन्वर्ट करना है PS. देखो, आउटपुट बाय इनपुट, दिस इज द ओवरऑल एफिशिएंसी. ऑलवेज रिमेंबर सर, in the examination he will say the Pelton wheel is developing 9650 kilowatt. उसका मतलब वो क्या है सर? It is not the runner power, it is the final shaft power. In the question, if nothing is given, it is actually the shaft power. In the question, and don't say sir he has not given whether it is runner power or input power or कुछ नहीं. So if nothing is given, it is the final output, that is the shaft power. Is this clear my dear students? अगर क्लैरिटी आ गया तो मजा आएगा सर. ओके चलो आगे बढ़ते हैं सर. सो ओवरऑल एफिशिएंसी ये आ गया. एक काम करते हैं सर मित्रों, लेट मी सी सम लिंक बिटवीन दिस टू. एक सेकंड देखो इधर. नॉजल एफिशिएंसी, ब्लेड एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी, तीनों मल्टीप्लाई करना सर. नॉजल मैकेनिकल, नॉजल ब्लेड मैकेनिकल. व्हाट इज नॉजल? काइनेटिक एनर्जी बाय WQH. Blade. What is blade? Runner by kinetic energy. And what is mechanical? Shaft by runner. ठीक है. So I have, देखो, nozzle is kinetic energy by WQH. Blade is PR by KE. Mechanical is PS by PR. अब देखो, PR गया, kinetic गया. So this is shaft power by WQH. Can anyone tell what is shaft power by WQH overall? So therefore, the overall efficiency is the product of nozzle, blade, mechanical. And ये बहुत important है मित्रों. क्या ये बात सभी को समझ में आया सर? So if you want the overall efficiency, it will be nozzle into blade into mechanical efficiency. एक बार बोलो सब लोग, खुशियानी बंदा. आ रहा हूं सर. मुजाहिद आ रहा हूं सर. मुजाहिद, मुझे पता है सर. If this is clear, I'll proceed मित्रों. खुशियानी बंदा खुशों की नहीं. चलो सर, अभी एक एफिशिएंसी बचा है सर.
ओवरऑल देखे, वी हैव सीन ओवरऑल nozzle, blade, then mechanical. There is one efficiency left, that is known as hydraulic efficiency. Is it so? If you are clear with this, I'll proceed, sir. Chandan Babu, Babu Chandan. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. चलो चलो चलो, सब लोग एक बार बोलो ओके सर, ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आई थिंक अप टू दिस देर इज नो प्रॉब्लम। देर इज वन एफिशिएंसी नोन एज हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। व्हाट इज दिस, लेट अस से, मतलब मेरे टरबाइन में हाइड्रोलिक एक्शन कहां तक है एक बार देख लेंगे सर। एक बार देखो, दिस इज माई नॉजल एंड दिस हेड इज एच, और यहां से V1 से आके इट विल एंटर and it is developing runner form. My question is, after this is there any fluid? एक बार फ्लूइड आके टकरा के पावर डेवलप किया, इसके बाद कोई फ्लूइड है, हाइड्रोलिक मतलब वाटर का एक्शन है क्या सर? यू टेल मी सर, वंस द फ्लूइड इज एंटरिंग, बिकॉज दिस द पावर प्लांट। अब ये मत बोलना सर ग्रास हेड है ना, पेनिस्टाक से, नो 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 नो, पावर यूनिट, दिस इज द पावर यूनिट। सो रिजर्वायर से लेकर वो नहीं होता है सर। सो ऑलरेडी हैव टेकन लॉसेस, ऑलरेडी यहां पे वो ग्रास हेड से लॉसेस ले चुके हैं सर, ऑलरेडी लॉसेस आर इंक्लूडेड। सो यहां से हाइड्रोलिक एक्शन, फ्लूइड वाटर आ रहा है, वाटर फ्लो के ब्लेड को घुमा रहा है, सो ये पावर डेवलप हो चुका है सर। सो आफ्टर दिस देयर इज अ शाफ्ट, देयर इज नो फ्लूइड, तो हाइड्रोलिक एक्शन एंड्स वंस द रनर पावर इज डेवलप्ड। एक बार फ्लूइड आके रनर का पावर डेवलप किया, हाइड्रोलिक एक्शन एंड्स। इसके बाद देयर इज नो हाइड्रोलिक एक्शन, देयर इज मैकेनिकल एक्शन। ओके सर, स्वाइप ये इनपुट है, बट इनपुट को अगर लिखेंगे तो WKH, और ये क्या डेवलप कर रहा है सर? दिस रनर पावर। सो दिस इज हाइड्रोलिक, दिस इज हाइड्रोलिक, दिस इज हाइड्रोलिक। सो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू हाइड्रोलिक एक्शन। ये इनपुट से ये आउटपुट आ गया, सो इट इज रनर पावर बाय WQH। दिस इज माई हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। समझ में आया सर सभी को? Because with this input I'm getting this output, runner power by WKH, this is my hydraulic efficiency। क्या ये बात सभी को समझ में आई? दिस इज क्लियर है। अब बहुत सिंपल है सर, हाइड्रोलिक इक्वेशन भी आ गया है सर। एक बार देखना मित्रों, हाइड्रोलिक इज PR by WKH, very good, but what is nozzle into blade? Hydraulic. So overall efficiency, this is hydraulic and this is mechanical। Sit sir, excellent students of India, khatam, bye bye, tata, goodbye, gap। बफर हो रहा है, बफर हो रहा है, इज इट बफरिंग? नहीं ना, अभी ठीक है, हुआ था लेकिन अभी ठीक है। इफ इट इज क्लियर आई प्रोसीड सर। तो माय डियर लविंग स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड ऑल एफिशिएंसीज? बिल्कुल सर, ऐप पे देखो, ऐप पे कैसा होगा, पूरा ऐप भी रेडी होगा सर। अभी हम चेक कर रहे हैं, मतलब पूरा, क्योंकि जब हम आएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। व्हेन वी एंटर देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। पूरा टेस्टिंग चल रहा है, सुनिए केयरफुली। तो ऐप में मैं कैसे प्लान कर रहा हूं ना, व्हेन आई टीच when I teach concepts with models, I'll be using big screen, I'll be using big screen, and when I start doing numericals, pen tab से करेंगे। मजा आएगा ना? बोलो आप, जैसा बोले वैसा। पहले प्रोडक्शन और मैथमेटिक्स से शुरू होगा सर। ठीक है,
सर आप सब लीक कर रहे हैं पूरा, बिल्कुल लीक करेंगे, क्या है, नहीं तो अयो दिस इज लीक्ड, ये सब नाटक नहीं सर, लीक्ड ओ ये सब नाटक नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़े सर। सो इफ यू से यस देन आई प्रोसीड। तो इस क्या सभी को पूरे एफिशिएंसीज क्लियर हो गए सर? डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन? इसरो फाइनल की इज रिलीज, तो मैं क्या करूं सर? तो मुझे भेज दीजिए, मैं देखूंगा। देखो मैं आपको क्लैरिटी से बता रहा हूं, मैं ऐसा फी नहीं रखूंगा 1999, क्योंकि ना ये कोई क्या बोलते हैं, ये कोई फेस्टिवल का सेल नहीं है। बिकॉज आई विल कीप द फी वेरी प्रीमियम रेट, मतलब कोई ऑफर डिस्काउंट सेल व्हील ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम नोबल प्रोफेशन में हैं। लेकिन आपको फ्लेक्सिबिलिटी दूंगा। व्हाट इज फ्लेक्सिबिलिटी? यू कैन, इफ यू कैन नॉट पे एट वंस, यू हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू पे मंथली। ठीक है, बिकॉज अगर आपको क्वालिटी चाहिए तो ये सब चीजें नहीं पूछते हैं सर। अगर आपको पैसों के पीछे, मतलब आजकल बच्चे 50-50 हजार का स्मार्टफोन ले सकते, लेकिन दे कैनॉट पे द फी। दिस इज द आयरनी आई एम टेलिंग यू, वेरी सैड। मतलब 4-4 हजार का जीन पैंट ले सकते, लेकिन फी पे नहीं, मतलब दिस इज ऑल पीटी, यू नो। आई आपके पर्सनल मुझे कोई डिस्कस करना नहीं है सर, आई डोंट वांट टू डिस्कस ऑल दिस, सॉरी। I cannot discuss these personal things. नहीं सॉरी सर, मैं कोई देखो, मैं एक आदमी मेरे से डिस्कस, आई स्वेर एक आदमी मेरे से डिस्कस कर रहा था। ऐसा करो सर, फीस देखो देखो देखो, आई वॉज शॉक्ड, यू नो सर, फी यू कीप 2x एंड यू से 50% डिस्काउंट एंड यू गिव x, तो ऑलरेडी इट इज x। मैं ये सब चीजें जब आपको इंडस्ट्रियल पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विद डिस्काउंट्स, कितना धोखा है वो बताऊंगा सर। ये सब धोखा है सर। कोई बात नहीं, बिकॉज आप तो इंजीनियर है, तो क्या नहीं, शाले प्रोसीड सर। आई सेड टू दैट पर्सन, आई विल नॉट डू दिस, आई विल कीप दिस ओनली, आई विल कीप दिस ओनली एंड आई विल गिव एट दिस रेट ओनली। आई सेड वेरी क्लियरली। बट एक मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स को डेफिनेटली, बिकॉज वो कुछ बोल रहे थे सर, वी हैव कम फॉर यू, तो उनके लिए देयर विल बी बिग रिलीफ। ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए बिग रिलीफ रहेगा सर, उसमें कोई डाउट नहीं है। फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स देयर विल बी बिग रिलीफ। ओके राइट, देयर विल बी बिग रिलीफ सर। फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स डेफिनेटली देयर विल बी बिग रिलीफ, उसमें कोई डाउट नहीं है सर। बिकॉज उनको वो भी मैं आइडेंटिफाई किया। आप बोलेंगे, कोई भी आके ओल्ड स्टूडेंट बोलेगा, आहा आई नो हु इज माई ओल्ड स्टूडेंट, कौन क्लासेस अटेंड कर रहे थे, आई नो एवरीथिंग। ठीक है सर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना, ओनली फ्यू स्टूडेंट्स सर, सर आप ये क्वालिटी से पढ़ाएंगे क्या, ये पूछ रहे। लेकिन ज्यादातर लोग, सर फी बहुत कम रखो सर। ठीक है, ठीक है, शैल वी प्रोसीड? हाँ चलो, लेट मी एक बार रिफ्रेश कर लेंगे सर, पूरे पूरे ऑल एफिशिएंसीज एक बार एक ही टेबल पे रिकलेक्ट करेंगे सर। ऑल एफिशिएंसीज एक ही, सो दैट यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। ऑल एफिशिएंसीज देखो, H, कैन आई राइट दिस एज WQH पावर? यस, इसको लिखेंगे हाफ m डॉट v1 स्क्वायर, दिस इज आवर काइनेटिक एनर्जी। देन इट एंटर्स, इसको रनर लिखेंगे सर, इसको रनर लिखेंगे सर। देन देर विल बी रनर पावर, रनर। उसके बाद यहां से देर विल बी शाफ्ट पावर, फाइनली इट इज शाफ्ट पावर। अब देखो मित्रों, दिस इज रनर पावर, दिस इज शाफ्ट पावर। मुझे बताओ ये एफिशिएंसी को क्या बोलेंगे सर? सो नोजल एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बाय WQH, नोजल एफिशिएंसी, वेयर काइनेटिक एनर्जी हाफ। उसके बाद ब्लेड एफिशिएंसी इज इक्वल टू, ब्लेड के लिए रनर बाय काइनेटिक एनर्जी, रनर, ये रनर बाय काइनेटिक एनर्जी, ब्लेड के लिए ये काइनेटिक एनर्जी है। उसके बाद
मैकेनिकल विल बी इक्वल टू, मित्रों व्हाट इज मैकेनिकल, शाफ्ट बाय रनर, एंड ये इसको बोलेंगे हाइड्रोलिक। इधर देखो सर, दिस वी कॉल इट एज हाइड्रोलिक, ये हाइड्रोलिक। सो व्हाट इज हाइड्रोलिक सर, बिकॉज हाइड्रोलिक एक्शन, सो हाइड्रोलिक के लिए ये आउटपुट है सर रनर, एंड हाइड्रोलिक के लिए ये है इनपुट, इनपुट WQH। क्लास के बाद आप मुझे मैसेज कर सकते क्या फीस रखना है, लेकिन ओपनली कुछ मत करना। क्लास के बाद यू हैव माई नंबर ना, आफ्टर द क्लास आप मैसेज कीजिए नए स्टूडेंट्स के लिए क्या होना चाहिए, आप पुराने स्टूडेंट्स के लिए क्या होना चाहिए, क्लास के बाद मैसेज कीजिए सर, आई विल कंसिडर दैट। ओके, इज दिस ओके? आफ्टर द क्लास यू मैसेज मी सर दिस शुड बी अ फीस, लेकिन मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं सर, आई एम गिविंग वन ऑप्शन कि आप मंथली पे कर सकते हो, दैट्स फी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, तो ऑल द एफिशिएंसीज आर क्लियर मी, इज दिस ओके सर? क्या ये समझ में है सर? फाइनली द ओवरऑल एफिशिएंसी इज nozzle blade, then nozzle blade mechanical, this is mechanical, and this can be written as hydraulic. Overall is equal to, this is hydraulic into mechanical, overall is hydraulic into mechanical. Is this okay? This can be written as hydraulic. Overall is equal to, this is hydraulic. अभी ऑफलाइन का नहीं सोचा सर। So if the efficiencies are clear, I'll attack questions. मैं अटैक करूंगा सर। Shall I attack questions सर? तो आप परमिशन देंगे तो I'll attack questions. चलो, take this question. हाँ, बिफोर दैट कुछ बातें करेंगे सर। सर क्या बातें करेंगे? देखो, बिफोर दैट मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार देखना सर, दिस इज द नोजल and let this diameter be D. This is the nozzle diameter. So from here, yahan se, you know my dear students, from here the fluid is coming out with a velocity v1. The fluid is coming out with a velocity v1. So can you tell me what is the discharge? Discharge is equal to area. What is that area? Pi by 4, because from the nozzle it is coming. So therefore, it is the area of the nozzle, cross-sectional area of the nozzle. Is area से the diameter is pi by 4 d square. With what velocity it is coming from the nozzle v1? This is the discharge, sir. But this is the discharge from single nozzle. So now I write discharge from single nozzle is equal to, Q is equal to pi by 4 d square into V1. This is the equation, sir. Pi by 4 d square into V1. This is the equation for discharge from a single nozzle. This is the equation of discharge from a single nozzle. If there are n number of nozzles, अरे एक nozzle से इतना आया, तो अगर n number of nozzles है, तो if there are n number of nozzles, if there are n number of nozzles, then total discharge will be equal to n into discharge from each nozzle. Each nozzle is this. So this will be equal to Q total is equal to n into pi by 4 d square V1. ये होगा आपका टोटल डिस्चार्ज। क्या ये बात सबको समझ में आई सर? और एक बात सर, देखो, क्लियर। हाँ, नाउ प्लीज नोट डाउन दैट दिस इज द रनर डायमीटर सर। ये मीन एक्चुअली कैसा मीन है सर, एक बार मैं बताता हूं सर, सो दिस इज द आउटर डायमीटर, ये मीन डायमीटर सर, ये रनर डायमीटर, मीन डायमीटर। तो अगर आपको यू चाहिए, ब्लेड मतलब जिस वेलोसिटी से ब्लेड घूम रहा है, u इज इक्वल टू पाई डी एन बाई 68। तो दिस विल गिव मी, व्हील के ऊपर जो ब्लेड है ना, उसका वेलोसिटी चाहिए, ब्लेड स्पीड चाहिए, u इज पाई डी, कैपिटल डी इज द डायमीटर ऑफ द व्हील, मीन डायमीटर ऑफ द रनर। तो कंफ्यूज मत होना स्मॉल डी और कैपिटल डी से। इज इट ओके? Is this okay? मित्रों, इज इट ओके? हाँ या ना में बताइए सर।
If this is clear, I'll proceed, sir. So capital D और small d से कंफ्यूज मत होना. Capital D is mean diameter of the runner, wheel का diameter. Small d is nozzle diameter. Nozzle से wheel पे, nozzle से आके blade पे टकरा के it's going on. Is it okay? चलो, let's do some questions so that you will gain some confidence. So are you ready, my dear students? Are you ready? चलो. Now please read. A Pelton wheel is to be designed for a shaft power of 9560 kilowatt. एक सेकंड देखो. What is the shaft power, sir? देखो एक बार. The shaft power is 9560 kilowatt. Okay, leave it. मैं आपको ट्रिक बताता हूं सर, क्या अटकना है. While working under head of 350, so what is the head, sir? The head is 350 meter. Okay. And और कुछ दिया सर, the head is 350. The runner speed is 750 rpm. Okay. The runner speed is 750 rpm. Excellent. And the overall efficiency is given by, what is the overall efficiency, sir? 0.85. I'll do this, sir. This is a conventional question. ये IES का question है, sir. पहले ये करेंगे. Small questions can be done easily. First we'll do IES question, sir. Overall efficiency. Then already given और कुछ दिया, sir. इधर देखो. Small d by capital D. It is also known as jet ratio. The small d nozzle diameter to the wheel diameter is 1/6. Excellent. क्या मतलब है, sir? अगर व्हील का डायमीटर 6 मीटर है तो नोजल का डायमीटर 1 मीटर है. तो नोजल का डायमीटर 1 मीटर कैसा होता है, सर? इट विल बी इन सेंटीमीटर. ओके, वो दिया है. अभी पूछा क्या है, सर? अभी पूछा है फाइंड कैपिटल डी. क्या क्या फाइंड आउट करना है? व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू फाइंड? एक सेकेंड. वी हैव टू फाइंड आउट कैपिटल डी, दैट इज व्हील डायमीटर, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द जेट डायमीटर and the number of jets n. Some other data is also given, my dear students. Some other data is also given. What is the data? The coefficient of velocity is 0.985 and the blade speed ratio u by v1, that is rho, is equal to 0.45. One student asked me a question. Sir, एक student ने मेरे से सवाल किया. एक सेकंड. सर, आपने बोला रो इज इक्वल टू 0.5, 1/2. रो इज 1. दैट इज फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी. दैट इज फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी. यहां पे तो ही हैज नॉट यूज्ड द वर्ड मैक्सिमम एफिशिएंसी. दैट इज फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी. आर वी क्लियर, सर? आर वी क्लियर, माय डियर सर? दैट इज फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी. ओके, अब देखो, मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, सर, हाउ टू अटैक पेल्टन व्हील क्वेश्चंस. कभी भी याद रखना, पेल्टन व्हील क्वेश्चंस शुड बी स्टार्टेड विथ V1. V1 फाइंड आउट करने से, देखो, V1 से स्टार्ट करो सर. आप कभी भी याद रखना, पेल्टन व्हील क्वेश्चन मस्ट बी स्टार्टेड विथ V1. V1 is the jet velocity. V1 is the spouting velocity. V1 is the absolute velocity of the fluid entering the V1 is the absolute velocity of the fluid entering the nozzle. Okay, right. Now let's see how we proceed. You know very well the absolute velocity. Yesterday I derived one equation. It is CV into root of 2gh. Anyone remembers? कभी भी याद रखना, पेल्टन व्हील के क्वेश्चन को ओपन करना है तो V1 से स्टार्ट करो. दोबारा बता रहा हूं सर, अगर आपको पेल्टन व्हील का क्वेश्चन ओपन करना है, यू स्टार्ट विथ V1. ये ब्लाइंड माइंड में याद रख लेना सर. ठीक है सर जी. अब देखो, तो V1, व्हाट इज V1, सर? CV, व्हाट इज CV? 0. Keep calculators ready. Head is given as 350. Correct? वंडरफुल सर, वंडरफुल मुजाहिद, वंडरफुल रुद्र, बहुत बढ़िया. सब रेडी रहो सर. एक्सलेंट, एक्सलेंट. ये आ गया सर. ओके, वंस V1 इज नोन,
देखो ऑलरेडी ही हैज गिवन दिस रेशियो, वट एवर द रेशियो इज गिवन वहां से शुरू करना। देखो सर, व्हाट इज u by v1? द वैल्यू ऑफ u by v1 इज 0.45, u by v1 is 0.45, so therefore u is equal to 0.45 into v1. What is v1? 81.62. So u is equal to, correct? Yes, ये सही है ना सर? Is this correct? 36.73 correct है? अरे no one is giving answer. यस, वेरी गुड सर, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या अटैक कर रहा है सर? बहुत ही सिंपल है सर जी। क्या सिंपल है सर? क्या सिंपल है सर? मुझे तो डर लग रहा है सर। ना स्मॉल डी पता है ना कैपिटल डी पता है। क्या डर है सर? नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूं, सुनिए। देखो, u is blade speed is equal to pi dn by 60. So u is 36.731 pi. I do not know d. And what is the speed given, sir? Already n is given. N is given somewhere. Yes, 750 rpm. 750 rpm. N is 750 rpm, sir. 750 by 60. So you know, my dear students, this is in meter. Why it is in meter? Because this is in meter per second. तो कितना आ रहा है सर? कैपिटल डी आ गया सर? कैपिटल डी आ गया ना? Yes, he has to find out capital D. So the runner diameter, capital D, this is known as mean diameter of the runner. व्हील का अराउंड 1 मीटर है सर। फील करो एक बार, अराउंड 1 मीटर है। हमारा हाइट कितना होता है सर? रफली मेरा हाइट तो मे बी 1.65 मीटर और सो, जो भी है, वट एवर इट मे बी। तो 1 मीटर इज समथिंग लाइक दिस, 1 मीटर। तो उतना का डायमीटर है सर, मीन डायमीटर। फील आ गया सर, नो प्रॉब्लम। नाउ आई वांट स्मॉल डी, and how can I find small d? Already you know that small d over capital D is equal to 1 by 6. So therefore small d is equal to capital D by 6. So therefore small d is equal to 0.9353 by 6. कितना आ रहा सर? और 15.6 सेंटीमीटर। क्या ये सही है सर? 0.15, इज दिस करेक्ट मित्रों? गलत है? Yes, it is the nozzle dia or jet dia. Excellent, sir. It is nozzle dia or jet dia. Wonderful, wonderful. Nozzle dia or jet dia. Excellent, sir. No problem at all. No problem at all. ठीक है सर जी। अभी क्या पूछा है सर? Anything more? Anything more? नंबर ऑफ जेट्स। ओ माय गॉड, नंबर ऑफ जेट्स। इधर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। दिस आई हैव टू डू इट, दिस आई हैव टू डू इट। वेट वेट वेट। discharge from single nozzle, it is pi by 4 d square into v1, because देखो nozzle से आ रहा है, the nozzle diameter is d and it is coming out with v1. So देखो pi by 4, what is d small d? It is 0.156 whole square into v1. What is v1, sir? I think v1 is known to me 81.62. एक बार देखो, दिस इज मीटर स्क्वायर, दिस इज मीटर पर सेकंड। मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकंड इज मीटर क्यूब पर सेकंड। एक बार डिस्चार्ज बताओ सर। फ्रॉम सिंगल नोजल इट इज 1.5578 मीटर क्यूब पर सेकंड।
करेक्ट, चलो 1.55, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। बट आई वॉन्ट द नंबर ऑफ नॉजल्स। देखो एक बार मेरे प्यारे दोस्तों, हाउ डू आई डू दिस? Something is given here, overall efficiency is given, and your teacher has taught one point very clearly. The overall efficiency is given by shaft power by WQH. Yes or no, sir? Yes or no? The overall efficiency is shaft power by WQH. Yes or no? Yes. देखो देखो मेरे प्यारे सज्जनों, ये ओवरऑल है सर, तो ये कौन सा डिस्चार्ज होगा? वेन एवर इट इज ओवरऑल, ये पूरा सिस्टम का, कंप्लीट सिस्टम का है, सो दिस विल गिव मी द टोटल डिस्चार्ज। कभी भी याद रखना, फ्रॉम दिस इक्वेशन आई विल गेट द टोटल डिस्चार्ज विच इंक्लूड्स ऑल द नॉजल्स। सो देयरफॉर the overall efficiency is 0.85. Here you may be committing a mistake. So if this is in kilowatt, this should be in kilowatt. If this is in watt, this should be in watt. ध्यान से सुनो, W is, एक बार यूनिट्स के तरफ ध्यान देंगे सर हम। लेट्स फोकस ऑन यूनिट्स। यूनिट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द स्पेसिफिक वेट इज न्यूटन पर मीटर क्यूब, डिस्चार्ज इज मीटर क्यूब पर सेकेंड, हेड इज इन मीटर, तो ये गया। न्यूटन मीटर इज जूल, जूल पर सेकंड इज वॉट, तो ये वॉट में आएगा सर, ये वॉट में आएगा सर, ये वॉट में आएगा सर, ये वॉट में आएगा, ये दिस विल बी इन वॉट, ये वॉट में आएगा। अगर भी वॉट में है, दिस शुड ऑल्सो बी इन वॉट। ओवरऑल एफिशिएंसी इज 0.85 इज इक्वल टू 9560, 9560, it is kilo means 10 power 3 watt. What is the specific weight of water? Because the fluid is water. The specific weight of water is rho g. So rho is 1000, g is 9.81. So this will be 9810. I don't know the total discharge and the head is 350 meter. So from here, I'll get the total discharge. Anyone with total discharge? So I think 9560 divided by 0.85, 9810, ये आ रहा है सर 3.27। यस, फ्रॉम द सिंगल, देखो एक बार, फ्रॉम द सिंगल nozzle the discharge is 1.55, total is 3.27. So therefore, see, number of nozzle will be equal to total discharge by discharge from each nozzle. So therefore we have, my dear students, therefore we have the number of jets will be equal to total is already, you know, just now we got 3.27, each nozzle say 1.5578 कुछ आ रहा है, so therefore this is 1.5578, तो ये आ रहा है roughly 2.1, तो I'll take number of nozzles as what? 2, 2 आएगा सर, is it okay? वंडरफुल सर, वंडरफुल। तो ये व्हाई आई गिव बिग क्वेश्चन इनिशियली सो दैट आपको कुछ कॉन्फिडेंस आ जाए। सो एक्चुअली एक ही क्वेश्चन है लेकिन सो मेनी थिंग्स वी हैव सॉल्व्ड। तो हैव यू अंडरस्टूड माय डियर स्टूडेंट्स? बोलो सर जी, यू पीपल आर नॉट सेइंग। चलो लेट्स गो, हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन? तो इफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया ना, आई थिंक यू गेन सम लिटिल कॉन्फिडेंस, you gain some confidence. Yes, we'll go to the next one. ये करो, I'll do it sir, आराम से। पहले आप पढ़ो सर, first we'll do some lengthy questions, then we'll take objective questions. आराम से, first we'll do some lengthy questions, then we'll take objective questions. In a Pelton wheel, the jet deflects through an angle of 165. Means indirectly, what information is given? The jet deflection angle is 165. So what will be the blade angle at exit? 180 minus jet deflection angle. I have already given. देखो एक बार. I think I have given this. Please, my dear students. देखो. So beta 2 is equal to
180 minus jet deflection angle. So therefore, beta 2 is equal to 15. ठीक है सर जी. Aha. And VR2 is given as 0.85 VR1. VR2 is 0.85 VR1. ये भी दिया है. The exit whirl is 0. क्या मतलब है सर? So exit whirl is 0 means VW2 is 0. Whirl means VW. What does exit whirl 0 indicate? So exit is 0 means, I repeat, exit whirl is 0 means VW2 is 0. And the head is given as 650 meter. Okay. The coefficient of velocity is 0.97. Hanji. The diameter is 10 centimeter means 0.1 meter. And capital D is 1.2 meter. ये भी दिया है सर. Absolutely fine. क्या क्या पूछा? This is the data given. And speed, tangential force, runner power, diagram और bleeding efficiency. एक बार देखेंगे क्या क्या पूछा है सर. Speed n यहां पे लिखूंगा सर. Let me write whatever is asked in here. Speed पूछा है, tangential force पूछा है, हाँ जी, and runner power पूछा है, हाँ जी, and the diagram और bleed efficiency ये पूछा है सर. ठीक है, ठीक है सर. अरे यार कहाँ गया वो? अरे क्वेश्चन अंडू करेंगे. अरे यार, हाँ, राइट. Right. Okay. Good. Exactly. Someone said case 2 हुआ. Yes, it is case 2. Yes, it is case 2. In case 2, VWT is 100% case 2 है sir. And it is also known as axial exit बोलते हैं. Because the fluid is leaving axially. V2 is equal to VF2. VWT is 0. Yes, absolutely correct. मुजाहिद बाय, तुम तो छा गए रे. तू तो छा गए रे बेटा. देखो, एक सेकंड. अब कैसे करेंगे सर इस क्वेश्चन को? कहां से शुरू करेंगे? कैन यू हेल्प मी एज टू हाउ टू डू? वेयर फ्रॉम वी स्टार्ट? कहां से स्टार्ट करेंगे? मैं आपको क्लैरिटी से बोला, V1 इज इक्वल टू CV रूट 2GH. तो V1 विल बी इक्वल टू CV इज 0.97 into 2 times G is 9.81 and the head is 650. That is given. The head is given. 2 into 9.81 into 650. 2 into 9.81 into 650. कितना आ रहा है सर? V1 कितना आ रहा है सर? I am getting 109. एक बार प्लीज क्रॉस चेक. इज दिस करेक्ट? गलत है सर? वेरी गुड. एक्सेलेंट. V1 आ गया. उसके बाद क्या करो सर? एक सेकेंड. Can I write V1 is also equal to VW1? You know, inlet पे मित्रों, inlet पे this is V1 which is also VW1 and this is U and this is VR1. V1, okay. And what about VR1 sir? तो यहां से क्लैरिटी से यस और नो? एक सेकंड. V1 is this is V1. V1 is also equal to VW1. Excellent. अब आइए सर, अब आइए. तो व्हाट इज VR1? मित्रों,
What is VR1? देखो, can I write VR1 as V1 minus U? देखो, VR1 as V1 minus U. Yes, we can write. देखो, ये मेरा, this is my U, this is my U, and this is my VR1. So VR1 is V1 minus U. Absolutely correct. Absolutely correct. Okay, sir. हाँ जी सर, यहां से क्या करेंगे, बट क्लियरली इट इज गिवन VR2 is equal to 0.85. Can I say the value of K is 0.85? Yes, sir. So therefore, 0.85 times VR2 is 0.85 VR1. What is VR1? V1 minus U. ये आ गया सर. क्लियर 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 क्लियर. तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अब यहां से मैं आगे कैसे बढ़ू सर? आई एम थिंकिंग सर, एनी अदर, चल मैं बताता हूं सर. एक बार आप फर्स्ट यू ड्रॉ द एग्जिट वेलोसिटी ट्रायंगल. यू नो द एग्जिट वेलोसिटी ट्रायंगल इज समथिंग लाइक दिस. Correct? Because he said VW2 is 0. I think this is the correct triangle. I think this is the correct triangle. Okay, sir. Okay, okay. No problem. So, you know that VR2 cos beta 2 is equal to what, sir? VR2, this is VR2, 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 opposite is sign, VR2 cos beta 2. Anyone, what is VR2? Array, this is VR2 cos beta 2. I repeat, VR2, ये sin है, ये cos है. तो VR2 cos beta 2 is equal to U. Excellent, sir. But what is VR2? देखो बार, 0.85 times VR2 is 0.85 V1 minus U cos beta 2 is equal to U. Excellent, sir. आराम से, I'm connecting all the dots. I'm connecting all the dots. देखो देखो, 0.85. Already we have calculated V1. V1 is 109.54. 109.54 minus U into cos beta 2 is 15 degree. Already मुझे पता है सर, beta 2 is given as 15 degree. Beta 2 is 15 degree. Excellent, sir. Excellent. Now, cos beta 2 is equal to U. आराम से, टेंशन नहीं लेने का. इसको मैं कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, मैं करता हूं सर. सो एवरीथिंग इज नोन. एक सेकंड. cos 15 into 0.85. This is 0.821. देखो, cos 15 into 0.85, 0.821 into 109.54 minus U is equal to U. ठीक है सर जी. तो मैं क्या करूंगा, 1.21, तो 109.54 माइनस U इज इक्वल टू U बाई 0.821. इसको इधर लेना. दिस विल बी इक्वल टू 1.218 U. सो ये हो जाएगा आपका 109.54 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा, इट विल बी, it will be U plus 1.218 U. So therefore 109.54 is equal to 2.218 U. So therefore U is equal to 49.387 meter per second. Is this correct? Anyone with you? एक बार बोलो सर. 42 आ रहा है. मैं गलत किया क्या सर?
I don't know, sir. I 49 point something. यहां आने के बाद U is equal to pi dn by 60. So blade speed is 49.387 pi. I do not know D. And I think D is given, sir. D is given. What is D, sir? D is 1.2 meter. D is already given 1.2 meter. N I don't know by 60. So you will get N in RPM 49 point something into 60 divided by pi divided by 1.2. So N is 786 RPM. अच्छा नंबर है सर 786. It's a good number. Clear? Is that correct? 786. और क्या पूछा है सर? I think what is the other thing he has? So he has speed, PR, ND, diagram efficiency, tangential force. एक second. Very good, sir. क्या आ गया? So what is the runner power? The runner power is given by m dot into VW1 plus or minus VW2 into U. But already this is zero. So the runner power is given by m dot into VW1 into U because VW2 is 0. But यहाँ पे एक प्रॉब्लम है सर, मास फ्लो रेट इज नॉट नोन. एक बार क्वेश्चन को देखना सर. आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू सी द क्वेश्चन. बेसिक क्वेश्चन को देखना एक बार. सो क्या इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ नॉजल्स का कुछ जिक्र है सर? बोलो. कुछ नंबर ऑफ नॉजल्स का कुछ बोला नहीं. व्हेन नथिंग इज गिवन आई टेक नंबर ऑफ नॉजल्स एज 1. वो तो थंब रूल है सर. व्हेन नथिंग इज गिवन आई टेक नंबर ऑफ नॉजल्स एज 1. ठीक है, आई टेक द नंबर ऑफ नॉजल्स एज 1. नो प्रॉब्लम एट ऑल. और क्या चाहिए सर? आई थिंक ये लिंक दे. ओके. हाँ चलो. This is the question given. ठीक है. Let's calculate the runner power. तो already you know, my dear students, मेरे प्यारे दोस्तों, discharge is equal to pi by 4 d square into V1. But this is the discharge from a single nozzle. ये discharge single nozzle का है. लेकिन यहां पे कुछ नहीं बोला है. सो व्हेन नथिंग इज सेड आई टेक मतलब नंबर ऑफ नॉजल्स एज 1. ओके. सो क्या ये डायमीटर दिया है सर? ऑलरेडी V1 इज नोन. एक सेकंड. यस, स्मॉल d इज गिवन एज 0.1. V1 इज 109.54. 109.54. देखो, द डिस्चार्ज इज गिवन बाय pi by 4. What is the diameter given, sir? अभी तो भूल गए. Diameter क्या दिया सर? What is the diameter? 0.1 meter. So the nozzle diameter is 0.1 square. And what is the absolute velocity? 109.54. तो please calculate the discharge. थोड़ा डिस्चार्ज कैलकुलेट करो सर. बोलो डिस्चार्ज. So mass flow rate is equal to rho AV, but area into velocity is discharge. So mass flow rate is equal to, कभी भी याद रखना, mass flow rate can be written as rho into Q. So which fluid is flowing? Water is flowing. So mass flow rho is 1000, and the discharge is 0.8603. So this will be equal to
860.3 meter cube per second. This is actually the mass flow rate. This is the mass flow rate. अब हो गया सर, तो यहां पे रनर पावर कैलकुलेट करना सर. कैलकुलेट द रनर पावर. सो द रनर पावर इज गिवन बाय, माय डियर स्टूडेंट्स, द रनर पावर इज गिवन बाय mass flow rate is 860.3 VW1. I think already VW1 is V1 because देखो, so at the inlet V1 is equal to VW1. Already V1 is 109 point कितना था सर, कहां गया, 109.54. So therefore 109.54 into U. Already we have calculated U. देखो m dot VW1 U, m dot VW1 U, because VW2 is 0. देखो एक बार इक्वेशन देखना सर, I wrote the complete equation, ये 0 है. तो what is U sir? U value is 49.387. U is 49.387. एक बार यूनिट चेक करेंगे सर. मास फ्लो रेट इज kg per second, velocity is meter per second, velocity is meter per second, kg meter per second square is newton, newton meter is joule, joule per second is watt. ये watt में आएगा सर. एनीवन? 860.3 into 109.54 into 49.387, so many watt. This will be 4654 kilowatt. गलत है सर, गलत है सर. I have not committed any mistake. My calculation is not my part sir, calculation is your part. Okay, this is the runner power. And what is the blade efficiency sir? The blade efficiency is runner power by blade efficiency is runner power by the runner power by kinetic energy. एक सेकेंड, हम मिस्टेक किए सर. व्हाट इज द ब्लेड एफिशिएंसी? द ब्लेड, देखो एक बार देखो, फ्रॉम नहीं, देखो विथ व्हाट वेलोसिटी इट इज एंटरिंग V1, तो यहां ब्लेड पे गया, तो ब्लेड इज डेवलपिंग PR और इनपुट इज काइनेटिक एनर्जी. Kinetic energy is half m dot V1 square. Excellent, sir. Again, you will commit a mistake. Mass flow rate is kg per second and velocity square is meter per second into meter per second. ध्यान से सुनिएगा सर. Mass flow rate half का कोई यूनिट है. Mass flow rate is kg per second. V square, V is meter per second, V square means meter per kg meter per second square, ये न्यूटन आएगा. न्यूटन में इज जूल, जूल per second is watt. ये watt में है तो ये भी watt में रखना सर. So therefore runner power is 4654 into 10 power 3 by half. Mass flow rate is 860.3 and V1 is 109.54 V1 square. This is the kinetic energy. एक बार कैलकुलेट करो सर. कोई बात नहीं. तो एनीवन, हैव यू अंडरस्टूड सर? सो रनर पावर, ब्लेड एफिशिएंसी, ब्लेड के लिए आउटपुट इज रनर, ब्लेड के लिए आउटपुट इज रनर, इनपुट इज काइनेटिक. काइनेटिक इज हाफ m डॉट v स्क्वायर. तो ये आ रहा है सर डायग्राम और ब्लेड एफिशिएंसीज 0.9017 और 90.17%. इज इट करेक्ट? डायग्राम और ब्लेड एफिशिएंसीज 0.9017. करेक्ट? If you say yes, then I'll proceed, sir. Wonderful, sir. Now, अभी क्या चाहिए, sir? Let's see. अभी क्या क्या चाहिए एक बार देखो. Speed is already calculated 786. Diagram runner power. एक last है. Already diagram efficiency is calculated 90.17. Runner power is 4654 kilowatt. The speed is 786 and I need tangential force. देखो देखो. What does tangential force mean? मैं आपको कुछ लॉजिक्स बताऊंगा सर, डिटेल वे में जाएंगे सर, मतलब 2 मिनट. देखो टेंजेंशियल फोर्स,
What is the torque, sir? Torque, this tangential force is also known as driving force on the wheel. Tangential force is also known as driving force on the wheel. So the torque is equal to Ft into R. Torque is equal to Ft into R. क्या ये बात सबको समझ में? Yes, sir. Where R is the radius of the radius. देखो, what is R? Radius of the रनर का रेडियस. एंड दिस ये पूछ रहा है सर, कैसे करेंगे सर? एक सेकंड. पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू ओमेगा. ये तो रनर पावर है सर, ये तो रनर पावर इज इक्वल टू, ये तो क्योंकि रनर इज डेवलपिंग पावर, रनर पावर इज टॉर्क इनटू ओमेगा. ठीक है सर. अब देखो, रनर पावर कैन बी रिटन एज टॉर्क, बट व्हाट इज टॉर्क? टेंजेंशियल फोर्स. ध्यान से सुनिएगा सर, टॉर्क इज टेंजेंशियल फोर्स इनटू आर इनटू ओमेगा. बट ऑलरेडी वी हैव सीन, ध्यान से सुनिए, omega can be written as 2 pi n by 60 and r can be written as half of the diameter. You know already r omega is blade speed. दोबारा बता रहा हूं सर. Let's calculate r omega. r को लिखेंगे d by 2 and omega is 2 pi n by 60. तो ये 2 गया. Pi d n by 60. This is pi d n by 60. What is pi d n by 60 sir? It is u. So r omega is nothing but blade speed. So the runner power is equal to tangential force into r omega is blade speed. तो आज से whenever you want the tangential force or driving force, it will be runner power by u. Runner power by u. Runner power, ये बहुत important है sir. Runner power by u. But already you know the runner power is, मित्रों, already the runner power is m dot into vw1 plus or minus vw2 into u. This is the runner power. So tangential force is runner power by u. तो ये कट जाएगा. तो आज से tangential force is directly m dot into vw1 plus or minus vw2. एक स्टूडेंट ने पूछा, सर इतना गोल घुमा के ऐसा क्यों खा रहा है सर? Runner power is tangential force. Tangential force is nothing but net force. Newton second law is rate of change of tangential momentum. So therefore, tangential direction में जो momentum, mass into velocity, वो change हो रहा है. That is also equal to force. Directly आ जाएगा. तो इस केस में ऑलरेडी vw2 is 0. इस केस में ऑलरेडी vw2 is 0. समझ में आ रहा है सर? तो यहां पे कैलकुलेट करो सर. So directly you can calculate from this, or the tangential force is equal to runner power by u. What is runner power? Already you have calculated. Runner power is 4654 kilowatt. 4654 kilowatt. 4654 kilo means 10 power 3 watt. 10 power 3 watt by u. Already u is calculated. u का वैल्यू है सर मेरे पास. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u सर? u का वैल्यू है, समवेयर वी हैव कैलकुलेटेड u. हमने u का वैल्यू कैलकुलेट किया सर. u का वैल्यू कितना है सर? समवेयर वी हैव कैलकुलेटेड u. अरे यार u कितना है रे? 49.387. 49.387. 49.387. सो एक बार देखो, ये वॉट में है सर. वॉट इज जूल पर सेकेंड एंड दिस वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ये गया. तो क्या होगा सर? जूल पर मीटर. जूल इज न्यूटन मीटर पर मीटर. तो ये कट गया. आंसर इज इन न्यूटन. फोर्स इज इन न्यूटन. कितना आ रहा सर? व्हाट इज द टेंजेंशियल फोर्स? व्हाट इज द टेंजेंशियल फोर्स? 4654 9 और 94.235 किलो न्यूटन. क्या ये सही है सर? वाह. यस, व्हाई नॉट चंदन? व्हाई नॉट? इट कैन. क्लियर? हाँ, इसको दूसरी तरीके से अभी तो बताया ना. The tangential force is m dot vw1. ऐसा भी करेंगे सर. एक बार देखो, we'll do like this also. We'll try to do like this also. एक बार देखो. Other way, हमने क्या किया? रनर पावर, we have divided runner power with blade speed. The other way is, देखो, the tangential force is equal to m dot into vw2 is already 0, तो vw1. एक बार देखो, m dot is कितना था सर? मास फ्लो रेट कितना है सर? The mass flow rate is 860.3. 860.3 into vw1. What is vw1?
What is VW1, sir? What is VW1? So VW1 is already V1. VW1 is already V1. So VW1 is already V1. So what is VW1 or V1? कहाँ गया रे? V1 or VW1? V1 or VW1? 109.54. 109.54. 109.54. देखो मास फ्लो रेट इज केजी पर सेकंड एंड वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड. केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन में आ रहा है सर. कितना आ रहा है सर ये? 09.54 इंटू 860.3 सेम आ रहा है सर. 94237 न्यूटन और 94.237 किलो न्यूटन. बिल्कुल सेम आ रहा है सर. सर आप लोगों को समझ में आया सर? सर आज का क्लास समझ में आया सर सभी को? नो. नो. का क्रिस्टल क्लियर? मजा आ गया? है नहीं है? ठीक है. सो एक्चुअली tomorrow I am going to my village. Tomorrow, day after tomorrow, I'll not take class because I'm going to my village. तो कल क्या है सर? I think we'll be starting on first, that is Happy New Year. तो न्यू ईयर के दिन इवनिंग स्टार्ट, फर्स्ट के इवनिंग स्टार्ट करेंगे. टुमारो 30th, डे आफ्टर टुमारो 31st, 2 days I am not available, I am traveling. So 31st 8 o'clock evening I'll be taking class. फर्स्ट के इवनिंग. अब देखो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं सर. देखो देखो व्हाट इज माय प्लान. देखो देखो सर अब मैं कुछ प्लान बताऊंगा सर. सो आई विल बी टेकिंग क्वालिटी क्वेश्चंस ऑन थर्मोडायनेमिक्स एंड अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स के क्वालिटी क्वेश्चंस स्पेशली फॉर एक्सी एंड एमी. क्वालिटी मींस क्वालिटी क्वेश्चंस ये करवाऊंगा बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड मी थोड़ा जल्दी करवाओ इसको. चलो ठीक है करवाऊंगा. उसके बाद एक ग्रैंड टेस्ट आई हैव प्लान, मतलब जबरदस्त क्वेश्चन सर, सारे नए क्वेश्चन. तो वी आर मीटिंग ऑन फर्स्ट. फ्लूइड का रिवीजन स्पेशली फ्लूइड डायनेमिक्स. वाव, न्यू पार्टी विथ स्टडी. ओके, एनीथिंग मोर? ऑलरेडी रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम आपको मैं रिलीज रिकॉर्ड करके दे रहा हूं सर. पीपल आस्क रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम. कुछ नहीं है सर उसमें, इतना सिंपल वे में पढ़ाऊंगा सर आपको रेनॉल्ड्स ट्रांसपोर्ट थ्योरम. लेट मी एक्सप्लेन अगेन. इतना सिंपल वे में पढ़ाऊंगा कि आप बोलेंगे इतने छोटे चीज को हम इतना डर गए थे. तो सिंप्लीफिकेशन भी करना बहुत जरूरी है सर. ठीक है. तो वी आर मीटिंग ऑन फर्स्ट. फर्स्ट के दिन क्या डे होगा सर? आज क्या है रे? आज मंडे है, ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे के दिन मिल रहे हैं सर. अब सैटरडे संडे भी प्लान करूंगा, आप थोड़ा जल्दी जल्दी ले लेंगे. विल इट बी ओके? ठीक है. सो आई डोंट वरी. फी तो मैं अच्छा ही रखूंगा सर, मतलब ऐसा नहीं कि 2199 ऐसा नहीं होगा सर. ये तो मेरे से नहीं होगा सर, बिकॉज आई शुड ऐसा नहीं कि मतलब एनीथिंग फ्री इज कॉस्टली. ठीक है. अभी कुछ नहीं. अगर आपको पढ़ना है तो यू विल फाइंड वे आउट. अगर आपको कोई रीजन है कि क्लासेस नहीं करना है तो यू विल फाइंड द रीजन. सो आई डोंट माइंड इवन इफ 2 स्टूडेंट्स आर कमिंग, आई विल बी टीचिंग सर, बट आई विल बी टीचिंग नीटली. मतलब नया मटेरियल चल रहा है सर, मुझे बहुत मेहनत करना पड़ रहा है. ओके. और कुछ? डोंट वरी. तो आई कीप इट ऑन EMI मोड आल्सो. This time I will be covering the entire syllabus. Don't worry at all. ठीक है. आज का क्लास समझ में आया सर? मुजाहिद,
वर्चुअल वर्क सारा करूंगा। हाँ, एनी वन कैन मैसेज अबाउट द फी, क्लास के बाद इमीडिएटली, मतलब चार्ट में मत करना सर, कमेंट यूट्यूब पे मत करना सर, आई विल बी डिलीटिंग इमीडिएटली। मुझे पर्सनली मेरे नंबर पे, आई थिंक यू हैव माई नंबर ना, इफ यू हैव माई नंबर, इस नंबर पे आप लोग मैसेज कीजिए सर, यू मैसेज ऑन दिस नंबर कि व्हाट फी आर यू लाइक एक्सपेक्टिंग, ये नहीं कि सर कीप फ्री, ठीक है। एंड आफ्टर द क्लास यू मैसेज मी, मतलब कमेंट में कैसा था क्लास, ओके। चलो फिर, सो वी आर मीटिंग व्हेन सर, हम कब मिल रहे हैं सर? वी आर मीटिंग, टुडे इज मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वी आर मीटिंग ऑन थर्सडे, मतलब हैप्पी न्यू ईयर। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, सिंपली डेट चेंज होगा, तो हैप्पी न्यू ईयर बोलने से भी कोई मजा नहीं आएगा, सिंपली डेट चेंज होगा, मेहनत करेंगे तो आएगा। सो वी आर मीटिंग ऑन 1st January 2026 at 8 PM, ठीक है सर, ठीक है। चलो फिर, आई एम एंडिंग द सेशन, थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय। सो काइंडली शेयर योर हाउ वाज द क्लास इन द फॉर्म ऑफ कमेंट, ओके, बाय बाय। चलो हैप्पी न्यू ईयर बोलूंगा, फिर क्या करेंगे, मैं हैप्पी न्यू ईयर बोलने से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेहनत करो, ओके, राइट। फिर चलो, बाय बाय, थैंक यू। शैल आई एंड द सेशन मित्रों, शैल आई एंड द सेशन? Good night. Good night. Bye bye. So please tell me, have you understood? एक बार, if you have, see, efficiencies are, all efficiencies I have discussed in detail. Derivations I have discussed. Graph I have discussed. Conventional questions किए sir. Okay? Right. Good night.